Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Right, wonderful. Online guys, please confirm whether we are audible, visible, and what else? Bas, audible, visible, or kuch nahi. Chalo. Come on, guys. Chalo. We'll start. We'll proceed. So, friends, we were discussing the topic of residential status and what, my dear friends, scope of total income. In that, we are done with discussion about residential status, where we covered the residential status of different types of persons, and scope of total income also. Section 5 we have discussed, section 7 we have discussed. We are just left with to talk about section 9, and that's some interesting points we'll discuss, and we'll happily solve some very wonderful problems. Are we ready, everyone, friends? Chalo beta batao, what is section 2.7? Assessee, come on. 2.9, assessment year. 225A, once again. 2.7, 2.9, 225A. Come on. India covers territory, territorial waters, continental shelf, exclusive economic zone, seabed, subsoil underlying such water, airspace above territory and territorial waters. What is section 231? Person. 234, section 3, section 4, chargeability section. Section 5, scope of total income. And as per section 5, my dear friends, what are the two types of income? Indian income and foreign income. What is Indian income? Which is accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. What is foreign income? Accrued and received both outside India. अगर कुछ भी अगर इंडिया में है तो इंडियन इनकम बोलेंगे, दोनों भी बाहर है तो फॉरेन इनकम बोलेंगे. अगर कोई इनकम इंडियन इनकम है तो क्या होगा? टैक्सेबल फॉर ROR, RNOR, NR. अगर इनकम फॉरेन इनकम है, taxable for ROR and also for RNOR in two cases. What are two cases? Business income, which is controlled wholly or partly from India. Professional income if setup is in India. बराबर है? आज सॉल्व करेंगे खतरनाक क्वेश्चंस. चलो बेटा. What is section 6.1? 6.6, basic and additional conditions for an individual. 6.2, 6.6, basic and additional conditions for HUF. बेटा HUF का HUF का बेसिक कंडीशन क्या है बेटा? What? If the control and management is wholly or partly in India, then it is regarded as resident. If control and management is wholly outside India, then it is regarded as non-resident. दोस्तों बराबर है? Good. 6.3, बोलो कंपनी केस में आंसर क्या है? इंडियन कंपनी ऑलवेज ए रेसिडेंट. इंडियन कंपनी ऑलवेज ए रेसिडेंट. फॉरेन कंपनी resident only if poem is wholly in India. What is poem? Place of effective management. दोस्तों बराबर है ना? Good. What is section 7? इनकम डिमिट टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. जिसमें 4 ही पॉइंट है जो पढ़े थे हम लोग. बोलो बेटा 4 पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF in excess of 12% of salary. Second, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. Third, transfer balance from URPF to RPF. Next, employer contribution to pension scheme notified under section 80 CCD. दोस्तों बराबर है ना? बोलो बेटा, what is the first point? Employer contribution to RPF in excess of 12% of salary. Second one, interest credited to RPF in excess of 9.5% per annum. Third, transfer balance from URPF to RPF. बराबर है? Last point, employer contribution to pension scheme of central government notified under section 80 CCD. दोस्तों क्लियर है? पक्का बेटा? Everyone? Good. Then, what is section 87A? 288A? 288B?
115 BB. Winnings from betting, gambling, card games, horse race, crossword puzzles, lotteries. Tax rate? रम्मी खेलो जीतो. 115 BBE. Unexplained incomes, investments, expenditures, taxed at a flat rate of 60%, plus surcharge 25%, plus HEC 4%, effective rate 78%. बराबर है ना बेटा? What is section 112? Long term capital gain general rate 20%. 112A. Long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which STT is paid is taxable at the rate of 10% on amount exceeding 1 lakh. Superb, man, superb. Good. Is that clear, no? Same case instead of long term, if it is short term, section 111A and tax at the rate of 15%. 115 BAC. Default tax regime. बोलो बेटा default tax regime में tax rate क्या है? Up to 3 lakhs nil. 3 lakh to 6 lakhs 5%. 6 lakhs to 9 lakh 10%. 9 lakh to 12 lakh 15%. 12 lakh to 15 lakhs 20%. Above 20 lakhs, above 15 lakhs 30%. Is it for which age category? No age category. Whatever is the age, the tax rates are common. Only one rates. 115 B A C. It's not A B C. Clear है ना बेटा? पक्का? चलो बेटा. Come on. So friends, in basic condition we discussed in section 6.1. बोलो बेटा, what are the basic conditions? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. बराबर है ना? And what is the interesting point we discussed in 6.1, my dear friends? There are 3 special cases. बोलो special case number 1. Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an Indian ship which is foreign bound. Next, Indian citizen or a person of Indian origin comes to India for a visit during previous year. और लास्ट केस में पॉइंट क्या है? अगर 182 सेटिस्फाई किए तो रेसिडेंट, 182 हो गया तो रेसिडेंट, 182 नहीं हुआ तो चेक करो टोटल इनकम कितना है. टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख के ऊपर है तो क्या करेंगे? सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन. 15 लाख के नीचे है तो कहानी खत्म, नॉन रेसिडेंट. बराबर है ना बेटा? अगर 15 लाख के ऊपर है तो सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन. व्हाट इज द सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन? 60 की जगह 120 एंड 365 सेटिस्फाई करो तो रेसिडेंट. एंड ये बंदा अगर सेकेंड मॉडिफाइड सेटिस्फाई करके रेसिडेंट बना, वो कभी भी आरओआर नहीं बन सकता है, वो सिर्फ आरएनओआर ही बनेगा. पक्का क्लैरिटी नो? वेरी गुड. व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस? 6.6. He must be resident in India in at least 2 out of 10 previous years preceding the previous year. Second, he must be in India for a period of 730 days or more during the 7 years preceding the previous year. बोलो बेटा. Next section 6.1a. Deemed resident. कितने कंडीशन है? 3. बोलो क्या है 3 कंडीशन? He must be an Indian citizen. His total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Last one. He is not liable to tax in any other country by reason of his residence or domicile or any other criteria of similar nature. बराबर है ना? एक और बार रिपीट करो. First condition, he must be an Indian citizen. Condition number 2,
his total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Number 3, he is not liable to tax in any other country by reason of his residence, domicile, or any other criteria of similar nature. That's it. दोस्तों क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर है everybody my dear friends I'm sure there is no doubt in whatever we discussed so far yes in excess of 9.5% per annum मतलब अब हम जितना भी पीएफ में पैसे लगाएंगे उस पर इंटरेस्ट आएगा ना अगर इंटरेस्ट 10% आ रहा है व्हाट इज टैक्सेबल इज 0.5% आरपीएफ अमाउंट पे टोटल अमाउंट जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है अगर इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर आ रहा है एक्सेस को हम टैक्स करेंगे बस क्लियर गाइस चलो बेटा लेट्स स्टार्ट सेक्शन 9 व्हाट इज सेक्शन 9 exactly name only says income deemed to accrue or arise in India even though it is not accrued in India still it is deemed to accrue in India. Are we clear friends? In this we have got some 7-8 points are there but आज हम 4 पॉइंट डिस्कस करके पूरा प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे आज ठीक है बाकी पॉइंट्स कल देख लेते हैं दोस्तों क्लियर है एवरीवन चलो पुट द हेडिंग इन योर बुक सेक्शन 9 incomes deemed to accrue or arise in India. Section 9 income deemed to accrue or arise in India. So clear? First point, simple. Just listen, then we'll write. First point, simple, my dear friends. Listen very clearly, think properly and tell. So for example, there is one person, Mr. Ping Pong, who is in Japan. This person has got house property in Pune. Nothing but house property in India. And tenant, what he is doing is, tenant is directly paying rent to Japan bank account only. समझे क्या बेटा? Sir, in India there are a lot of properties which are owned by foreigners. You're getting my point, everybody? चलो, ये property का owner कौन है? Mr. Ping Pong. And tenant is paying rent directly to Ping Pong's Japan's bank account. ठीक है? Now my question to you: is this Indian income or is it foreign income? क्यों? Because property is in India. Once property is in India, we say that it is deemed to accrue in India. Clear? Right, first point. Income from any property in India. Income from any property in India. Income from any property in India. Bracket में लिखो बेटा. Property can be income from any property in India. In bracket you write property can be movable or immovable. बराबर ना? Property can be movable or immovable. Movable or immovable. Comma. Don't close the bracket. Property can be movable or immovable, comma, tangible or intangible. समझे क्या बेटा? Property can be movable or immovable, and property can be tangible or intangible. What is intangible? Now they will tell which can't be touched, seen, felt. Horrible answer. Sir, intangible means there is no physical shape or form. Don't tell that word touch, seen, or felt. क्या है वो?
Nonsense. There is no physical shape or form. That's called intangible. That's it. So income from what, my dear friends? Any property in India. Next, second point. Income from Acha, listen. Common sense, listen. Ping pong has got property in India. Correct, my dear friends? Ping pong is selling that property to Jim Jam. Ping pong is selling to Jim Jam. Ping pong is in Japan. Jim Jam is also in Japan. Seller is in Japan. Buyer is also in Japan. Now tell me, is it what kind of income will come for seller? आप मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या? Whatever property is there, that property is sold by Mr. Ping Pong to Mr. Jim Jam. When property is sold, what will come? Capital gains. अरे बोलो यार, अभी ये कैपिटल गेन्स जो आएगा, किसको आएगा कैपिटल गेन? पिंग पोंग. अरे सेलर को आएगा ना रे, सेलर पिंग पोंग है रे. Who will get capital gain is ping pong. Is it Indian income or foreign income? क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया में. अरे यस और नो सर? चलो क्या लिखे आप? इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट. Income from transfer of capital asset. Income from transfer of capital asset situated in India. Income from transfer of capital asset situated in India. दोस्तों clear है? Everyone? Next point. Dividend paid by an Indian company. Clear? Next point. So what is dividend? We know, no? What is dividend? Portion of profit which is given to the shareholder. Do you think the dividend is taxable or not? Bolo beta. In fact, that is the biggest problem practically in companies. Listen very clearly, choti si baat. More for knowledge. Listen. Sir, if there is a partnership firm, what sir? They get a profit of 100 rupees. ठीक है? 100 रुपए पे टैक्स पे करेंगे 30 रुपए. बाकी 70 जो है ये पार्टनर्स लेके जाएंगे. बराबर है ना? अब आप मुझे बताओ, पार्टनर्स फिर से टैक्स पे करेंगे क्या 70 पे? अरे बोलना बेटा, पार्टनर्स 70 रुपए पे फिर से टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं. अभी देखो अदर साइड देयर इज अ कंपनी. व्हाट सर? कंपनी हैज गॉट प्रॉफिट ऑफ 100. नाउ कंपनी विल टेक पे टैक्स ऑफ 30. अभी बैलेंस कंपनी के पास कितना बच गया? अगर शेयर होल्डर को ये पैसा देना है, कैसा दे सकते हो? शेयर होल्डर को पैसे देना है तो कैसा दे सकते? डिविडेंड. एक बार डिविडेंड देते ही ये डिविडेंड फिर से टैक्सेबल. समझे? प्रैक्टिकली कंपनी में कितना बड़ा प्रॉब्लम है. सर केस समझ गए आप लोग? वापस बोल रहा बेटा, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म and if the firm is paying tax, whatever balance amount is left out, partners will take that money and partners will not pay tax again on that money. So story is over. But when it comes to company, अगर कंपनी के पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, कंपनी 30 रुपए टैक्स पे करेंगे. बाकी 70 अगर शेयर होल्डर्स को देना है, कंपनी कैन गिव दैट 70 रुपीज टू शेयर होल्डर ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिविडेंड. और अगर एक बार डिविडेंड दिए शेयर होल्डर के लिए, वापस टैक्सेबल. Technically, there is a tax on tax in companies. Actually, double tax nahi hai. It is not a double tax as such, because what they are telling is 100 rupees profit, whatever is there, 30 companies paying tax. Then balance amount is given to shareholder. Then shareholder is paying the tax on the amount what he is getting.
because company is different, shareholder are different, separate legal entity, diversion of ownership and management, and there is a separate treatment given to that. But in partnership firm आप सुने होंगे आपके फाउंडेशन में, पार्टनर्स पार्टनरशिप इज वन एंड द सेम. सुने, उसका फंडा ये है. समझे आप लोग? अगर हम सब मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाए, फर्म के पास प्रॉफिट बच गया, टैक्स पे करने के बाद अपन सब बांट लेंगे, फिर से टैक्स नहीं आएगा अपने को. बट अगर कंपनी है, शेयर होल्डर को पैसा देना है, तो कैसा दे सकते हैं? डिविडेंड. दैट डिविडेंड इज टैक्सेबल. अरे समझ रहे क्या? बोलना बेटा. फ्रेंड्स प्लीज रिप्लाई गाइस. एवरीबॉडी, डिविडेंड इज टैक्सेबल सर, देयर इज नो डाउट इन दैट. क्लियर? नो? समझ में आ गया ना? चलो क्या लिखे? थर्ड पॉइंट, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया. Dividend paid by an Indian company outside India. Even though it is paid outside India, the point is that dividend is paid by which company? Exactly. Next point. Any income payable. Next point. Any income payable. Any income payable for. Any income payable for services rendered in India. Any income payable for services rendered in, मतलब काम अगर इंडिया में करें तो ऑटोमेटिकली इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया. फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. Gifts received in India. Gifts received in India. If it exceeds, gifts received in India, if it exceeds, कितना बेटा? 50,000 per annum. अरे पढ़े ना बेटा ऑलरेडी. अब नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. सर लेट अस से there is one of our friend, Mr. Rahul. Okay, sir, he is an IAS officer. IAS मतलब पता है ना? इंडियन, बोला IAS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. IAS, IPS. अरे सुने या नहीं भाई? नाउ दिस IAS ऑफिसर इज वर्किंग, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, ही इज वर्किंग इन UK फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सर हो सकता है ना? ही इज वर्किंग इन UK, he is working in UK for गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इज इट पॉसिबल? यूके में क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? बोलो बेटा, क्या लगता है आपको क्या कर रहा है उधर बैठ के? रॉ एजेंट, एम्बेसडर्स. अरे यस और नो सर? देयर इज ए सर, इन एवरी फॉरेन कंट्री इंडिया हैज गॉट इंडियन एम्बेसी देयर. अपना एक ऑफिस है, अपना एक आदमी है वहां पे. क्यों क्यों रखे ऐसा? अपना एक ऑफिस, अपना एक आदमी को क्यों रखे? हाँ एग्जैक्टली, दो रीजन से. एक तो फॉर एग्जांपल अगर यूके में अपना ऑफिस है, अगर यूके का किसी बंदे को इंडिया में आना है तो अपन उसको वीजा देंगे. अरे जैसा अपने को बाहर जाना है तो वीजा लेना है, उन लोग को इंडिया में आना है तो अपन भी वीजा देंगे ना. ऐसा थोड़ी है फ्री एंट्री, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हम भी वीजा देते यार. अरे यार, so our country persons are sitting there giving visa to those country people, allowing them to come to India. बराबर है? उसके साथ साथ if there is any local problems which are being faced by Indian citizens there, our ambassadors will help them. अरे कितने सारे मूवीज देखे यार आप लोग, इतने मूवीज में दिखाते अपना इंडियन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी. बराबर है ना बेटा?
कितने मुझ में दिखाते पाकिस्तान में भी इंडिया का एम्बेसी है, बराबर है ना? अरे होता है बेटा, नाउ सुनो क्या बेटा, इंडियन फॉरेन सर्विस, अरे हाँ ठीक है, ओके मैन, ओके, लिसन, गेट बैक, सर लिसन, sir listen carefully please, listen, now there is government of India which is paying salary to him. अरे बराबर है ना? अभी मुझे सोच समझ के जवाब दो कुछ भी बोलने से पहले. सर राहुल, his salary is accrued where? बोलो, सैलरी इज अक्रूड वेयर? 100% आंसर इज यूके, बिकॉज काम तो यूके में ही कर रहा ना यार. अरे जिधर काम करेंगे उधर का इनकम अक्रू होगा यार. अरे यार सर, when I come to Pune and take a class in Pune, my income is accruing in Pune. Just because I am from Hyderabad, income is not accruing in Hyderabad. समझ गए आप एग्जाम्पल? आ जाओ वापस. अक्रूड वेयर? यूके. रिसीव्ड वेयर? यूके. If it is accrued in UK, received in UK, what kind of income? बोलो बेटा. But they told in the law, still it is Indian income. उसके लिए तो पढ़ा रहा ना बेटा. Still it is Indian income since it is deemed to accrue in India. I am not telling it is accrued in India. It is deemed to accrue in India. Deemed का power समझ गया ना बेटा? Exactly, sir. Now the concept is that salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India is deemed to accrue or arise in India. समझे क्या बेटा? Everybody, sir. But I'll repeat once again the point, listen very clearly. What they told in the law is that salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India is straight away taxable because it is deemed to accrue or arise in India. However, my dear friends, any allowances, any what beta? And perquisites. Allowances and perquisites are something like facilities, car facility, घर का facility, काम वाले को दिए. अरे बराबर है ना? Getting point everybody? Allowances and perquisites shall be exempt under section 10(7). मैंने ऐसे exempt, इसका मतलब क्या है? Not taxable. And I already told you that exempted incomes will not form part of total income, but deductions are those which are reduced from gross total income. दोनों में फर्क है ना बेटा? सबको, everybody? Guys, are we clear with this point everybody? All of us बेटा? चलो, salary paid by whom? Government of India to an Indian citizen working outside India is deemed to accrue or arise in India. Clear है? चलो कितने पॉइंट लिखे अपन अभी तक? 5 पॉइंट हो गया. ओ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी पेड बाय इसमें एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं एग्जांपल में. आई एम चेंजिंग दैट IAS टू IFS which stands for Indian Foreign Service. ठीक है ना बेटा? चलो क्या लिखे आप? सैलरी पेड बाय government of India salary paid by government of India to an Indian citizen salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India.
ऑब्वियसली नो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पे दे रही तो मतलब गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं ना. Salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India. Full stop. However, continue. However, comma, all the allowances and perquisites, you can see the spelling if you want. However, all the allowances and perquisites, however, all the allowances and perquisites paid abroad, allowances and perquisites paid abroad, paid abroad shall be exempt. However, all the allowances and perquisites paid abroad shall be exempt under section 10(7). Shall be exempt under section 10(7). I am sure we are clear with this beta. Everybody, chalo, take the example in the book. Take the example in book. Done, beta? Chalo, what are the points we have done so far? What is the first point we discussed? Income from any property in India. मतलब property India में है तो वो पक्का Indian income ही बनेगा. Next. Transfer of property in India. अगर India का कोई property बेच रहे तो it is deemed to accrue in India. Next बेटा. Dividend paid by Indian company outside India. अगर Indian company dividend pay कर रहा था तो पक्का it is deemed to accrue in India. फिर any income payable for services rendered in India. अगर एक बार इंडिया में काम करे तो खत्म, it is deemed to accrue in India. Next, gifts received in India. Good. Next, salary paid by government of India to an Indian citizen working outside India. However, allowances and perquisites paid abroad shall be exempt under section 10(7). दोस्तों clear? Everyone? That's it. That's the story of our. No, we still have some points. That's the story of our this point what we discussed. अभी तक clear है बेटा? एक last point पढ़ाऊंगा, उसके बाद we can happily
quickly get on with some interesting questions. सुन लो बेटा ध्यान से, बहुत ही टेरिफिक एग्जाम्पल है, सोच समझ के क्लैरिटी ले लेना प्लीज. चल लेट अस से there is one person, Mr. Raj, who is in Maharashtra, and this person, Mr. Raj, is planning to set up a 5-star hotel in Pune. ठीक है बेटा, चलेगा ना पुणे, या दूसरा कुछ चेंज करना है? चलेगा ना, ठीक है. He's planning to set up one 5-star hotel in Pune, and he wanted to set up that kind of 5-star hotel which is never there in Pune till now, with some unique designs, unique interiors, unique mindset, unique feel, unique ambience. So whenever we go to 5-star hotel or big star hotels, what is the reason we are paying more price? Not that food is fantastic, food is better outside only, but we go there and pay that price because of that ambience, feel. बराबर है ना बेटा? इट्स ऑल एम्बियंस एंड फील, एज सिंपल एज दैट. स्टार होटल में खाना अच्छा है बोल के कोई नहीं जाता है. स्टार होटल में जो भी जाते हैं अच्छा लगेगा बोल के जाते हैं, खाना अच्छा लगेगा बोल के कोई नहीं जाते. खाना तो अपने को बाहर ही अच्छा मिलता है, फैक्ट है वो. अरे ये सर नो सर, आप लोग इंस्टा पे देखे नहीं क्या वो रील्स? 200, 600, 1000, नहीं समझे क्या? अरे सिंपल सी बात है यार. अभी समोसा कितने का आती है? समोसा 15 रुपए 20 रुपए, बराबर है ना? स्टार होटल वाले क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, एक बड़ा प्लेट लेगा, वो समोसा लगाएगा, 2 ड्रॉप का चटनी लगाएगा. ऐसा 2 ड्रॉप चटनी लगाते उसका रेट 100 रुपए कर देगा. एक और ड्रॉप चटनी लगाया 200 का बन जाएगा. चटनी को ऐसा करेगा, ये समोसा 500 की हो जाएगी. इट्स ऑल प्रेजेंटेशन डूड. It's all presentation, man. That is how it is. As simple as that. Simple presentation makes the whole difference. The way you present, that's how it is. Sir, अपन एग्जाम जाते सर, ICA को अपना चेहरा नहीं पता. They don't know how we look. They don't know how handsome or beautiful we are. But the only thing they will decide based on answers what we wrote. Presentation, dude. Simple. That makes a whole difference. So now coming back, why I told this much story, because Raj wants to set up a 5-star hotel in Pune, and he wants to get some beautiful design like never before, ever after. That kind of design he wants to get for the star hotel. For that purpose, he got to know that there is one person, Mr. Ching Chang. Ching Chang of अरे नहीं रे भाई, चाइना क्यों, नॉर्थ कोरिया. अरे मिस्टर चिंग चैंग ऑफ सिंगापुर, who is one top architect, who is one top architect in Singapore. And Raj got to know that if he gives design, some unique design he'll give where the hotel looks fantastic. And he called Ching Chang and told, sir, can you please come to India? He told, India? No, I will not come anywhere out of Singapore. If you want some service, you come to Singapore and take the service and get lost. उतना तो एटीट्यूड रहेगा उसको. टॉप आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना बेटा? देन राज थॉट, अरे यार अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने को चिंग चांग से डिजाइन करवाना है, क्योंकि अपने को कुछ यूनिक डिजाइन लाना है. तो राज क्या किया? ही टुक ए फ्लाइट and went all the way to Singapore and got the design done. And got the design done for the hotel which is to be set up in India, in Pune. बराबर है ना बेटा? And there he paid him 25 lakh rupees. मतलब सिंगापुर जाके काम करवा के 25 लाख दे के वापस आया. समझ रहे क्या? अभी ये सब एपिसोड में, ये सब ड्रामा में पैसे कौन कमाया? चिंग चैंग. अभी आप मुझे बताओ, ये चिंग चैंग सिंगापुर के बाहर पैर रखा क्या? अरे बोलना बेटा.
अभी ये 25 लाख इज इनकम ऑफ whom? चिंग चैंग. हु इज इन वेयर? सिंगापुर. आप मुझे बताओ, दिस 25 लाख इज अक्रूड वेयर? इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सीधा का सीधा सिंगापुर. अरे बिकॉज उधर ही बैठ के तो काम किया ना यार, बाहर थोड़ी आया. नेक्स्ट, रिसीव्ड. accrued in Singapore, received in Singapore. बोलो बेटा, if it is accrued in Singapore, received in Singapore, what kind of income we call it? Foreign income. But the answer is, still it is Indian income. Because it is deemed to be accrued in India. समझ रहे क्या बेटा? Deemed to be accrued in India. What they told in the law is that in case of royalties or in case of fees for technical services, in case of royalties or fees for technical services, समझ गए? रॉयल्टी मतलब फॉर यूजिंग सम राइट और सम पेटेंट या कॉपीराइट यूज करने के लिए रॉयल्टी पे कर रहे, या तो कोई टेक्निकल सर्विस दिया. In that case, my dear friends, if it is related to business in India, then it is deemed to accrue or arise in India. So that means you have to understand that from whose point of view it is income? Ching Chang point of view. Actually Ching Chang किधर बैठ के काम किया? सिंगापुर में बैठ के काम किया, पैसे आया भी सिंगापुर में भी, but we are telling Ching Chang pay tax in India. अरे समझ रहे क्या? एक बड़ा डाउट आना चाहिए आपको दिमाग में. द बड़ा डाउट विच हैज टू कम इन द ब्रेन इज दैट, इफ नॉट नाउ, अगर फ्यूचर में आया तो डाउट, अगर बाई चांस आया तो डाउट ये आ सकता है, सर इंडियन गवर्नमेंट को मालूम कैसा पड़ेगा कि चिंग चांग को ऐसा 25 लाख मिला है कि उसको टैक्स करने के लिए? उसके लिए क्या होता है बेटा, सुनो. राज जो बंदा इंडिया में है वो अपना P&L अकाउंट बनाएगा जिसमें दिखाएगा टू टेक्निकल सर्विस फी पेड टू चिंग चांग करके P&L में एक्सपेंस बुक करेगा. अरे इसके लिए इनकम में मतलब इसके लिए तो एक्सपेंस ही है ना. तो राज के P&L अकाउंट में एक्सपेंस दिखेगा ना बेटा. नोटिस आएगा, भाई साहब तो फॉरेन वाले बंदे को पेमेंट किया तो TDS क्यों नहीं किया? दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अगर राज बोल रहा है ओ TDS शिट मैन मैं भूल गया, पकड़ इसको, राज को पकड़, 80 इन डिफॉल्ट लेके उसको अंदर. समझ रहे क्या? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिंग चांग पकड़ना मुश्किल है, बट उनको राज को पकड़ना बहुत ही आसान है. आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा. अरे ये सर नो सर, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दुनिया भर का सोर्सेस रहते हैं यार डेटा निकालने के लिए, और कभी ना कभी तो इसकी P&L में दिख रहा है ना एक्सपेंस ऐसा करके. एक बार अगर स्क्रूटनी खुला, स्क्रूटनी मतलब वेरिफिकेशन में नोटिस में आ गया, चेकिंग करना चालू कर दिए, तो मालूम तो पड़ जाती ना यार. सर यू गाइस आर सिटिंग इन अ प्लेस कॉल्ड पुणे. आई नो एवरीबॉडी इज नॉट फ्रॉम पुणे, ओनली 2-3 पीपल आर फ्रॉम पुणे, रेस्ट ऑल आउट स्टेशन ओनली. बट पुणे में एक बार क्या हुआ सर, आई टेल यू, सिंस टॉपिक हैज कम आई टेल यू. देयर वाज वन गाय, आई विल नॉट टेल द नेम, बट ही इज सेलिंग वड़ा पाव. He is selling vada pav. One day income tax officer in the morning he went to eat vada pav there. ये बहुत प्रैक्टिकल केस है, मैं स्टोरी नहीं बोल रहा आपको, गूगल में सर्च भी कर सकते हैं आप, ठीक है. He went to eat vada pav there and he was shocked to see that इस बंदे का बिजनेस नेक्स्ट लेवल चल रहा है. हर घंटे में 200-300 वड़ा पाव बेच रहा है, हर घंटे में, बराबर है ना. बट इसका इनकम टैक्स रिटर्न में तो इनकम कुछ भी नहीं है. समझ रहे? शाम में around 8 o'clock or 7:30 or so, income tax officer has called his team and he conducted income tax raid. He conducted what? Income tax raid. Checked all the drawers, cupboards, everything to check the cash, but he could not get any cash. वो बंदा भी होशियार है, बराबर है बेटा. 1 रुपए का कैश भी नहीं मिला. समझ रहे आप? बहुत ही कम कैश मिला. जिस हिसाब से उसका बिजनेस चल रहा है, जो कैश मिला है बिल्कुल संबंध नहीं है, तो बहुत ही कम कैश मिला. ऑफिसर ने क्या किया बताया उसके बाद? ही वेंट एंड ओपन द डस्टबिन. He went and opened the dustbin and counted number of paper plates in the dustbin. Number of what beta? Paper plates in the dustbin.
उन्होंने क्या बोला है, शाम में तुम्हारा बिजनेस 5 बजे चालू हुआ, अभी टाइम 7:30 हो रहा है, मतलब लास्ट 2.5 घंटे में इतना पेपर प्लेट से इधर, एक एक पेपर प्लेट में कम से कम एक वड़ा पाव तो आता है, एक एक वड़ा पाव का इतना प्राइस है, 2.5 घंटे में इतना है, मतलब शाम में 5 घंटे में कितना होगा, शाम में 5 घंटे में इतना, मतलब सुबह भी तुम 4 घंटे चलाते, सुबह 4 घंटे में कितना होगा, एक दिन में इतना होगा, मतलब पूरे पूरे हफ्ते में कितना होगा, एक हफ्ते में इतना होगा, मतलब संडे को ज्यादा भी हो सकता है कि संडे ज्यादा रहेगा, तो एक हफ्ते में इतना है, तो महीने का कितना है, महीने का कितना है, साल का कितना है, ये हो गया तुम्हारा टर्नओवर, जिसमें आपका स्टाफ का खर्चा इतना है, ये खर्चा इतना है, ये खर्चा इतना है, ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, टैक्स पे करो। आई एम नॉट टेलिंग यू स्टोरी, आई एम टेलिंग यू द रियल फैक्ट व्हाट हैज हैपेंड। कोई सुने ऐसा स्टोरी, सुने क्या, ठीक है, एनीवेज ट्रू। सो वड़ा पाव पर्सन को पकड़ने के लिए ये लोग डस्टबिन तक जाके चेक करे भाई, इनकम टैक्स वाले को मजाक मत समझो यार, वो लोग कोई भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या। एंड टुडेज डेट द जोक इज व्हाट यू नो, आज के दिन पे वो वड़ा पाव सेंटर अभी भी चल रहा है, एकदम मस्त चलता है वड़ा पाव सेंटर, वो वड़ा पाव सेंटर पे आज के डेट पे ही स्टॉप्ड यूजिंग पेपर प्लेट्स, नाउ ही इज यूजिंग स्टील प्लेट्स, वॉश करते जा रहे हैं, समझ गए आप। पेपर प्लेट, अगर स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट को वॉश कर रहे, मालूम कैसे पड़ेगा कितना दिन में कितने लोग खाए, क्या खाए यार। फ्रेंड्स, आर वी गेटिंग क्लैरिटी एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस। ये लास्ट बैच का स्टूडेंट कर्नाटक, लास्ट बैच का स्टूडेंट को ये कमेंट कर रहा है यूट्यूब पे, सर संडे को हॉलिडे दे दो, क्या नमूना है रे। एनीवेज सर, क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीबॉडी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझे क्या आप, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है यार, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलो गेट बैक टू योर बुक। हाँ ये वड़ा पाव वाले ने, हाँ करेक्ट बोलना, राज क्यों नहीं बताएगा, राज तो पक्का बताएगा, उसको एक्सपेंस मिलेगा ना, उसको एक्सपेंस नहीं मिला तो उसको नुकसान हो जाएगा ना। और अपन तो ऐसा लोग है, खर्चा नहीं भी हुआ तो खर्चा दिखाते, जो खर्चा हुआ वो नहीं दिखाए, तो ऐसा हो सकता है क्या। अपन ऐसे लोग हैं जो खर्चा नहीं हुआ वो भी दिखाते हैं अपन, अगर कुछ खर्चा एक्चुअल में हुआ है वो नहीं दिखाए, ऐसा तो हो सकता है क्या, बोलना बेटा। फ्रेंड्स एवरीबॉडी, चलो प्लीज पुट साइड हेडिंग, प्लीज पुट हेडिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी। Taxability of royalty and fees for technical services. Taxability of royalty and fees for technical services. ठीक है ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज पेड बाय, if it is paid by government of India, if it is paid by, if it is paid by government of India, then it is, if it is paid by government of India, then it is deemed to accrue or arise in India. If it is paid by government of India, if it is paid by government of India, then it is deemed to accrue or arise in India. Next point, if it is payable by, next point, if it is payable by
if it is payable by a resident, if it is payable by a resident, then it is deemed to accrue or arise in India. Then it is deemed to accrue or arise in India, except when used except when used for the purpose of business outside India, except when used for the purpose of except when used for the purpose of business outside India, or earning income or earning income from any source, or earning income from any source outside India. समझे ना बेटा? मतलब नॉर्मली डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया है, बट इफ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया देन इट इज नॉट डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया. एग्जांपल सर, अपना होटल जो सेटअप कर रहे वो कहाँ पे सेटअप कर रहे? इंडिया में. उसके लिए डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया है. बट अगर होटल इंडिया में सेटअप नहीं कर रहे, होटल इज बीइंग सेटअप इन दुबई, होटल अगर दुबई में बना रहे अपन स्टार होटल, तो फिर क्या होगा? इज इट डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया? नो, बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस इन इंडिया. समझे क्या बेटा? चलो लास्ट पॉइंट इन दिस, थर्ड पॉइंट. If it is paid by non-resident, if it is paid by non-resident, if it is paid by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India, then it is deemed to accrue or arise in India when used for the purpose of business or profession, when used for the purpose of business or profession carried on in India. When used for the purpose of business or profession carried on in where बेटा? India. अगर इंडिया में बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो इट इज डीम्ड टू अक्राइज इन इंडिया. क्लियर है ना बेटा? एवरीबॉडी, दैट्स इट. नेक्स्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ क्या हो गया अभी? रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. नाउ प्लीज पुट द साइड हेडिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. कौन सा बेटा? अच्छा रुको 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 रुको, करेक्ट, एक सेकंड एग्जाम्पल लिख लो पहले. ये क्या बंद किया? अच्छा,
Chalo, get back. Please put the heading taxability of interest. Taxability of what beta? Interest. Interest beta, interest. If it is payable by government of India, first point, if it is payable by government of India, if it is payable by government of India, then it is, if it is payable by government of India, then it is deemed to, if it is payable by government of India, then it is deemed to, what beta? Accrue or arise in India. अगर गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है तो खत्म. It is definitely deemed to accrue or arise in India. Then it is deemed to accrue or arise in India. Clear है ना? Next. Sir, in previous point of royalty and technical services, last point क्या लिखे एक बार पढ़ो ना. If it is paid by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India when used for the purpose of business or profession carried on in India. वहाँ पे एक और लाइन ऐड करो ना. Business or profession carried on in India or earning income. Business or profession carried on in India or earning income. Or earning income. Or earning income from any source in India. Or earning income from any source in India. Clear है? Get back. Get back. Get back. अब इंटरेस्ट में कौन सा पॉइंट हो गया? फर्स्ट पॉइंट पेएबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन इट इज डीम्ड टू अकर एज इन इंडिया. उस पर कोई डाउट नहीं है. सेकंड, if it is payable by resident, if it is payable by resident, then it is deemed to accrue or arise in India. If it is payable by resident, if it is payable by resident, then it is deemed to, if it is deemed to, then it is deemed to accrue or arise in India, except when, except when used, except when used for the purpose of, except when used for the purpose of business or profession carried on outside India. बराबर है ना? Except when used for the purpose of business or profession, except when used for the purpose of business or profession carried on outside India or earning any income, or earning any income, or earning any income from any source outside India, or earning any income from any source outside India, earning any income from any source outside India. Last point, if it is payable by,
if it is payable by, कौन बेटा, नॉन रेसिडेंट, if it is payable by non-resident, then it is, if it is payable by non-resident, then it is deemed to accrue or arise in India, then it is deemed to accrue or arise in India only when used, only when used for the purpose of, only when used for the purpose of business or profession, only when used for the purpose of business or profession carried on in India. Business or profession carried on in India. दोस्तों क्लियर है? लॉजिक इज वेरी सिंपल सर. अगर इंडिया रिलेटेड बिजनेस के लिए यूज कर रहे तो टैक्सेबल है, अगर इंडिया रिलेटेड का बिजनेस नहीं है तो नॉट टैक्सेबल है. दिस इज द टैक्स स्टेटमेंट फॉर रॉयल्टीज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड फॉर द इंटरेस्ट. आर वी आर फुली क्लियर एवरीबॉडी? दोस्तों, there are still some more points in section 9, but we'll discuss that later. Now we'll get back and happily discuss some interesting questions, and after that we'll come back to the balance points in section 9 and close this chapter. But to reach that stage we need to solve some questions. Ready? Chalo, pick up your material. आ जाओ. अभी तक कौन से क्वेश्चन हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तो डन हो. चलो सी द सेवेंथ क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Seventh question, page number 55. Ready? Can we have a look at it? Guys, please reply. See the question, come on. X is what, sir? Citizen of Pakistan. His maternal grandfather, मतलब नाना जी, exactly, was in a village near Karachi in 1933. इसका मतलब क्या है? That means Mr. X, our friend, is a person of Indian origin. समझ में आ गया? Continue. He comes to India on April 7, 2023 to complete a foreign assignment of his employer company, and he goes back on June 4th, 2023. सर, he has come to India, कुछ काम से, काम खत्म किया और चले गया. इसका मतलब क्या है? विजिट. अभी मुझे बोलो स्पेशल केस आएगा क्या? हाँ, क्यों? ये बंदा इंडियन सिटीजन नहीं है, पर ये बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है. इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. बराबर है ना बेटा? कब आए? अप्रैल 7. गया कब? 4 जून. बोलो कितना दिन है अप्रैल में? अप्रैल में कितना दिन इंडिया में है? 24. मार्च 31. सॉरी, अप्रैल हो गया 24, मई हो गया 31, जून हो गया 4 दिन. 50. एक्चुअली सर एक छोटू सा पॉइंट है. दैट इज, इफ एन इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ही हैज टू सैटिस्फाई 182 डेज कंडीशन. 182 सैटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट है. 182 नहीं हुआ, टोटल इनकम चेक कर लेते 15 लाख के ऊपर है क्या? 15 लाख के ऊपर है तो सेकंड मॉडिफाइड अप्लाई करो. बराबर है ना? मैं एक बात बोलूं क्या? ये क्वेश्चन में
15 लाख के ऊपर है नीचे है कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधा का सीधा आंसर है नॉन रेसिडेंट। क्योंकि फंडा सिंपल है, अगर 15 लाख के ऊपर भी है तभी भी तो 120 रहना है ना इंडिया में, ये है ही 59 डेज। 59 डेज है तो कैसा बन सकता है यार? अरे समझे क्या फ्रेंड्स, his status is definitely what? नॉन रेसिडेंट। समझे क्यों? नेक्स्ट लाइन देखो, मिसेस एक्स इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, तो क्या? तो क्या ऐसा कुछ है क्या? बीवी रेसिडेंट है तो अपन भी रेसिडेंट है, पापा जी रेसिडेंट है तो अपन नॉन रेसिडेंट है। एक नोट लिखा है तो आपको याद है, स्पाउस का, फैमिली का स्टेटस से आपका कोई संबंध नहीं है। कंटिन्यू। प्रायर टू April 7, 2023 he was in India as follows. My straight answer, all this is irrelevant. समझे क्या? ये क्रॉस मार्क क्यों लगा है समझे क्या? Why all that is relevant? Why all that is relevant? बेसिक ही गया ना यार, अगर रेसिडेंट है तो दिमाग चलाओ ना, एडिशनल कंडीशंस का वो सब दिमाग। अरे बेसिक ही गया, ये बंदा बन गया नॉन रेसिडेंट, तो पिछले साल से पहले क्या है, अपने को क्या करने का है? क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं अपना? अरे समझे क्या दोस्तों? वंस नॉन रेजिडेंट स्टोरी इज ओवर, पता है ना? चलो, ये बंदा क्या बन गया अभी? नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट है तो क्या इनकम टैक्सेबल है? ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। कम ऑन, इनकम्स क्या दिए? इनकम ऑफ एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 इज एज फॉलोस। सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ रहे क्या? क्वेश्चन में दो पार्ट से, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है पूछ रहा है, दूसरा कौन सा इनकम टैक्सेबल है कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है। दोस्तों क्लियर है क्या? देखो क्वेश्चन, सैलरी फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी रिसीव्ड इन पाकिस्तान फॉर रेंडरिंग सर्विस इन पाकिस्तान। जब भी आप आंसर बोलेंगे बेटा, उससे पहले अपने को क्या देखना है? सीधी सी बात, अक्रू कहां पे हुआ, रिसीव कहां पे हुआ? बोलो, व्हाट काइंड ऑफ इनकम? बोलो क्या होगा? फॉरेन इनकम हो गया तो नॉट टैक्सेबल, बिकॉज आवर हीरो इज नॉन रेसिडेंट। समझ रहे क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे क्या बेटा? चलो नेक्स्ट लाइन देखो, सैलरी फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी received in Pakistan for rendering service in India. Straight answer, Indian income, and it will become taxable. बेटा समझ रहे? पक्का? थर्ड बिट देखो, बिजनेस इनकम। बिजनेस इज इन UAE, UAE means Dubai, United Arab Emirates, UAE. It is partly controlled from Pakistan and partly from entire income is received in UAE. क्या लगता है आपको? हाँ हाँ, तो इंडियन इनकम कैसा हुआ? अरे बेटा आपको क्या पॉइंट था वो? RNOR है तो बिजनेस इज कंट्रोल होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया, देन इट इज टैक्सेबल। बट ये इनकम तो इंडियन इनकम नहीं है ना, इनकम तो फॉरेन इनकम ही है ना बेटा। अगर इनकम इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम बोलने के लिए दो ही चीजें देखते हैं अपन, अक्रू कहां पे हुआ, रिसीव कहां पे हुआ। इसमें अक्रू कहां पे हुआ? UAE में हुआ, क्योंकि बिजनेस UAE में। यू माइट आस्क सर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ना? अरे हाँ बेटा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो किसको फर्क पड़ता है? RNOR को फर्क पड़ता है, पर अपना दोस्त RNOR है क्या? वो NR है, बट है तो फॉरेन इनकम ना, इंडियन इनकम तो नहीं है ना। फिर समझे क्या पॉइंट? वैसा आता है एग्जाम का क्वेश्चन, 6 मार्क 8 मार्क। This kind of questions come in exam for 6 marks because they are asking two things in the question. One is residential status, second is scope of the total income, what is taxable. Next point, rental income from property situated in Mumbai. Income is received in Pakistan. Income is received in Pakistan. Property situated in India, so it becomes Indian income. आज ही पढ़े ना, इनकम डीम्ड टू अक्रॉस इन इंडिया। बेटा एक छोटू सा पॉइंट है, सुनो ना प्लीज, सुनो प्लीज। इन केस ऑफ सैलरी इनकम माय डियर फ्रेंड्स, इन केस ऑफ देयर इज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन of
50,000 बेटा. That means what you know, अगर आपका सैलरी 10 लाख है, आपको 10 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 9.5 लाख पे टैक्स पे करो. समझे क्या बेटा? It's a benefit given in the law. Friends, speak out. In the same way, in rental income also, which income beta? Rental income also, there is a standard deduction of 30% बेटा. इसका मतलब क्या है? सुन लो बेटा, सुनो सुनो सुनो. अगर आपका रेंटल इनकम 10 लाख रुपए है, आपको 10 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. 30% डिडक्शन ले लो 3 लाख रुपए, बाकी बचेगा 7 लाख रुपए. सिर्फ 7 लाख पे ही आपको टैक्स पे करना है. Friends, after this chapter of residential status, we will complete one small chotu cute topic called agricultural income, and after that immediately we will go to income from house property. There we'll talk very much in detail about this. Clear hai beta? House property will start soon. Income from house property will start in next 1-2 days. 2-3 दिन में चालू कर देंगे, 2 दिन में. Clear है? Next slide. Business income. Business is in UK. मैं लिखाऊंगा note. I'll make you write a note. Business is in UK. Partly controlled from UK, partly from Pakistan. Income is received in, and later on 50,000 is what beta? Remitted to India. Remitted to India. So what? अपने को रेमिटेंस से क्या मतलब है बेटा? अपने को किससे मतलब है? अक्रू कहाँ पे हुआ, रिसीव कहाँ पे हुआ? बोलो, अक्रू कहाँ पे हुआ? UK. रिसीव कहाँ पे हुआ? What kind of income? That's it. If it is foreign income, what will happen? Not taxable, because our friend is a non-resident. Non-resident we will tax only and only for Indian income. समझ रहे बेटा? दोस्तों, next slide. Birthday gifts. Received cash gifts in India from his friends. Wow, what a lovely friends. Some of them have sent gift check from Pakistan. क्या बात है? And the figure is 74,000. Straight away taxable, because it is greater than 50,000. See the question? Find out residential status and taxable income of X for assessment year 24-25. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्लियर है क्वेश्चन? सबको समझ में आया? पक्का? नहीं, सबके लिए, सबके लिए. I'll make you write a note. Don't worry. दोस्तों क्लियर है? Shall we start writing the answer? Right now. As per section 6.1, as per section 6.1, as per section 6.1, comma, an individual, somebody is asking online, सर पूरा 74,000 taxable होगा ना? 74,000, yes बेटा. More than 50,000 gift, entire amount is taxable. Next, क्या बोला मैंने? As per section 6.1, an individual is regarded as a resident. An individual is regarded as a resident if he satisfies any one of the basic condition. Clear, my dear friends? Next paragraph. Next paragraph. In case of an Indian citizen,
in case of an Indian citizen or a person of Indian origin, in case of an Indian citizen, in case of an Indian citizen or a person of Indian origin coming to India, in case of an Indian citizen or a person of Indian origin coming to India for a visit, then he must satisfy, then he must satisfy, then he must satisfy the first basic condition, then he must satisfy the first basic condition, he must satisfy the first basic condition to be regarded as a resident. He must satisfy the first basic condition to be regarded as a resident. बराबर है बेटा, full stop. However, comma, if total income bracket other than foreign sources, however, if total income bracket other than foreign sources, if total income bracket other than foreign sources bracket close exceeds what beta, 15 lakhs, 15 lakhs, then second modified basic condition is applicable. Then second modified basic condition is applicable. Then second modified basic condition is applicable. That is 120 days or more during the previous year, 120 days or more during the previous year, and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Next paragraph. In the given case, comma, Mr. X is in India, Mr. X is in India for how many days, sir? For 59 days during the previous year. He is in India for 59 days during the previous year. Full stop. Accordingly, comma, the residential status of Mr. X, accordingly, the residential status of Mr. X shall be non-resident. तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया बेटा. व्हाट इज दैट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? रेजिडेंट स्टेटस. ये होते ही अपने को लिखना है सेक्शन 5 के बारे में. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. As per section 5, comma,
non-resident is taxable as per section 5, comma, non-resident is taxable only in respect of, non-resident is taxable only in respect of Indian income. Non-resident is taxable only in respect of Indian income. That is, you know how to write, no? IE. That is income accrued. That is income accrued or received. Income accrued or received or deemed to be received. Income accrued or received or deemed to be received. Income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India. Deemed to occur as in India. That's it. Chalo. Please put the table now. Computation of total income of Mr. X for assessment year 24-25. Particulars. Nature of income. Amount. Take columns like this: particulars, nature of income, amount. Clear है? Sir, चलो first point. Salary from Pakistani company. Salary from Pakistani company. Salary from Pakistani company received in Pakistan. Salary from Pakistani company received in Pakistan for service in Pakistan. Salary from Pakistani company received in Pakistan for service in Pakistan. बराबर है ना बेटा? दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम क्या लिया अपन? बोलो, नेचर ऑफ इनकम क्या है? लिखो फॉरेन इनकम. नेचर ऑफ इनकम फॉरेन इनकम. बराबर ना? अमाउंट कॉलम, put a dash. That's it. Don't take the figure. बराबर है ना बेटा? टैक्सेबल नहीं है ना बेटा? टैक्सेबल नहीं है तो फिगर क्यों लेंगे? Just put one dash. That's it. Clear है? Next, salary from or instead of dash you can write nil. nil लिखो सीधा. ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट, सैलरी फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी. Salary from Pakistani company received in Pakistan. Salary from Pakistani company received in Pakistan for service in India. Salary from Pakistani company received in Pakistan for service in India. Clear है बेटा? चलो, nature of income, Indian income.
इंडियन इनकम। ब्रैकेट में लिखो बेटा 6,63,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन of 50,000. Standard deduction of what beta? 50,000. Bracket close. Amount कितना रहे? Take that figure in the amount column. 6,13,000. सर कभी कभी सुनो ना बेटा एक बार, instead of giving the word, sir please listen here, instead of giving the word salary from Pakistani company, they will sometimes use language like this. Income under head salaries. Bracket they will write computed. इसका मतलब क्या है? Already standard deduction is reduced. Now you don't reduce again. समझे क्या? अगर computed बोल दिया मतलब already ले लिए दोस्तों, पक्का? Done. Next. Business income in UAE. Business income in UAE. Business income in UAE and received in UAE. Business income in UAE and received in UAE. बोलो बेटा नेचर ऑफ इनकम क्या है? फॉरेन इनकम। अमाउंट कॉलम nil. नेक्स्ट पॉइंट बेटा देख के बोलो, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मुंबई। ब्रैकेट में लिखो बेटा 2,10,000 minus 30% standard deduction. ऐसा कभी सुने क्या अकाउंट्स में 30% डिडक्शन, 50,000 डिडक्शन? नहीं, अकाउंट्स इज डिफरेंट. इट्स एन आर्ट of recording, classifying, summarizing, analyzing. Tax is smart ways. Yes, true. क्या रे श्रेयस, बराबर है ना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ना? वंडरफुल. बोलो श्रेयस बेटा कितना आया फिगर? 1 लाख. नेचर ऑफ इनकम क्या लिखे? इंडियन इनकम. डन. नेक्स्ट, बिजनेस इनकम इन यूके. Business income in UK and received in UK. Business income in UK. Business income in UK and received in UK. Business income in UK and received in UK. बराबर है? बोलो नेचर ऑफ इनकम क्या है बेटा? सर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें कुछ दिया एक्चुअली. लेटर ऑन 50,000 रेमिटेड टू इंडिया. इसका कोई रिलेवेंस है क्या? नहीं, रेमिटेंस से अपने को संबंध ही नहीं है, अक्रूड रिसीट से संबंध है. क्लियर? नेचर ऑफ इनकम फॉरेन इनकम. अमाउंट कॉलम नील. मीनिंग क्या होता है? अच्छा, ये 10 लाख 10,72,000 वहीं पे आया, उसमें से 50,000 इंडिया में लेके आए. remitted to India, transferred to India. समझ गए ना? remitted means transferred. Next, last point, birthday gift received in India. Birthday gift received in India. Bracket taxable since it exceeds
taxable since it exceeds what beta 50,000. Taxable since it exceeds 50,000. Nature of income क्या है? Indian income. Amount column 74,000. That's it. Get the answer for taxable income. क्या है बेटा आंसर? The answer is 8,34,000. That's the answer for question number 7. I hope we are fully clear. सबको समझ में आया क्या बेटा? सर जस्ट एक पॉइंट लिखाऊंगा नोट आपको, पहले सुन लो फिर नोट लिखते हैं. सर सैलरी में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया था ना आपको मैं, दैट इज गिवन बाय सेक्शन 16(1)(a). सेक्शन 16(1)(a) और हाउस प्रॉपर्टी में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन बताया ना बेटा, दैट इज गिवन बाय सेक्शन 24(a). समझे क्या बेटा दोस्तों? चलो नोट लिखते हैं. अच्छा आप उधर ही लिख रहे क्या नोट? मैं तो नोट लिखा देता हूँ. ठीक है नोट लिख लो. स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड standard deduction is allowed in case of salary income. Standard deduction is allowed in case of salary income. Standard deduction is allowed in case of salary income as per section 16(1)(a). 16 ब्रैकेट 1(a). 1 और a दोनों एक ही ब्रैकेट में, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट नोट. Standard deduction of 30% is allowed. Standard deduction of 30% is allowed. Standard deduction of 30% is allowed in case of rental income. Standard deduction of 30% is allowed in case of rental income. In case of rental income as per section 24(a). 24(a). There is something called 24(b) also, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, जब हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे तब पढ़ेंगे. दोस्तों क्लियर है? Sir, I think this question gave us full clarity, what kind of question can come in the exam, where they will ask residential status and they will also ask total income कैसा निकालते हैं. पक्का क्लियर है? Done? Can I proceed next? चलो, आपको ब्रेक चाहिए क्या? किस किस को चाहिए? ओह सबको, ठीक है. एक 10 मिनट ब्रेक लेते फिर, ठीक है, ले लो. We'll take a 10 minutes break. We'll take a short break. After break, we'll come back. Online guys, stay tuned.
check. Hello. Yes. Get back, guys. So we start. Come on, guys. So we're discussing the concept of what? Residential status and scope of total income. Are we clear with what we have done so far, my dear friends? Bolo beta, what is section 5? Scope of total income. Bolo beta, as per section 5, what are the two types of income? Indian income and foreign income. What is Indian income? Income which is accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue as in India. What is foreign income? Income which is accrued and received both outside India. Bolo beta, if income is Indian income, what will happen? Taxable for whom? ROR, RNOR, NR. अगर इनकम फॉरेन इनकम है, टैक्सेबल सिर्फ ROR के लिए. RNOR only in two cases. Business income controlled wholly or partly from India. Professional income if set up is in India. Always keep in mind one very clear point. To decide whether Indian income or foreign income, we have to check where it is accrued, where it is received. Clear है? चलो बेटा, get back. Look at now question number. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. छोटू सा क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो बेटा, रेडी? क्वेश्चन नंबर 11. See that, my dear friends. From the following particulars of income furnished by Mr. Anand pertaining to year ended 31st March 2024, compute his total income for assessment year 24-25. If he is what? ROR, RNOR, NR. क्या खतरनाक क्वेश्चन है, समझे क्या? वो क्या पूछ रहे हैं? अगर ROR है तो क्या, RNOR है तो क्या, NR है तो क्या? बोलो बेटा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ROR करेंगे, फिर RNOR करेंगे, फिर NR करेंगे. बस एक ही टेबल बनाएंगे अपन. पर्टिकुलर्स, ROR, RNOR, NR. खत्म. बराबर है ना? क्यों अलग अलग सॉल्व करने का, टाइम वेस्ट करने का? चलो, लेट्स स्टार्ट. वेट, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. Short term capital gain on sale of shares in Indian company received in Japan. Bolo, what kind of income? Indian income. What will happen? Taxable for all. बराबर है ना? Next, second. Dividend from South African company received in South Africa. Not taxable for all the three. क्या बोल रहे बेटा? RNOR के लिए क्यों टैक्सेबल है बेटा? अरे सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कौन सा इनकम है ये? फॉरेन इनकम. टैक्सेबल फॉर होम? ओनली ROR. ओनली ROR. बराबर है ना दोस्तों? थर्ड बिट. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके डिपॉजिटेड इन ए बैंक इन यूके में डिपॉजिट हुआ बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू बैंकिंग चैनल्स. अब मुझे बताओ, रेमिटेड इंपॉर्टेंट है क्या अपने लिए? क्या इंपॉर्टेंट है? अक्रूवल एंड रिसीव्ड. बोलो, अक्रूवल किधर है? ये यूके. रिसीव्ड किधर है? यूके. व्हाट काइंड ऑफ इनकम? किसको टैक्स करेंगे? RRR. अभी RRR क्या है भाई? टैक्सेबल ओनली फॉर ROR. RNOR को टैक्स करेंगे क्या? ROR, RRR. ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट. डिविडेंड फ्रॉम SK लिमिटेड इंडियन कंपनी. इंडियन इनकम. किसको टैक्स करेंगे? सबको टैक्स करेंगे. अरे समझे क्या? एक ही टेबल बना के सॉल्व करेंगे यार, क्यों अलग अलग सॉल्व करेंगे यार? लास्ट वन. एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम ए लैंड इन मध्य प्रदेश. ऑल ना? बट द आंसर इज agricultural income from a land in India is exempt under section 10(1). And this exemption is only in case of agricultural income from a land in India. If it is agricultural income from a land in Uganda, answer is taxable.
बराबर है ना बेटा? यार दोस्तों सबको समझ में आ रहा है क्या? दैट्स इट, ये छोटू सा क्वेश्चन है। इसके बाद अपन 10th क्वेश्चन करते हैं, बिग क्वेश्चन। ठीक है ना? ले लो ले लो लो बेटा। नहीं वो काका लेके आए थे तो इसलिए मैं खाना खा रहा था तो उसकी वजह से नहीं गया था। ये अपन साथ में पीते हैं, ठीक है? चलो, वेलकम बेटा। क्यों? एक 5 मिनट के बाद पी लो बेटा, 5-10 मिनट के बाद पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वैसे चीज ऑर्डर किए ताकि अपन करते वक्त भी कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। चलो, सुबह वड़ा पाव का टॉपिक आता ही मैं सोचा वड़ा पाव मंगा देते पहले, फिर सोचा नहीं नेक्स्ट टाइम मंगाते वड़ा पाव। चलो कैन प्रोसीड। क्या बेटा? कम ऑन लेट्स स्टार्ट। Put heading computation of total income. Computation of total income. Computation of total income. Computation of total income of Mr. Anand. Online friends, cheers. Computation of total income of Mr. Anand for assessment year 24-25. चलो बेटा, क्या कॉलम्स क्या लेने हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेचर ऑफ इनकम कॉलम लिखना है नहीं लिखना है आपको? नेचर ऑफ इनकम कॉलम मैंडेटरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आपको लगता है नेचर ऑफ इनकम लिखना है अच्छा है बोले तो लिख लेंगे, लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है, लिखते हैं फिर। क्या कॉलम लेना है आपको? अरे पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा जगह ज्यादा दो। लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट कॉलम को इतना बड़ा जगह दे रहे हैं, पर्टिकुलर्स इतना छोटा कर रहे हैं। अभी आपको क्या कॉलम लेना है सुनो, पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ इनकम, ROR, RNOR, NR। RRR कोई कॉलम नहीं है। पर्टिकुलर्स, नेचर ऑफ इनकम, ROR, RNOR, NR। कैलकुलेटर को स्केल जैसा यूज कर रहे हैं, सही है। ROR, RNOR, NR। चलो चलो स्टार्ट। बोलो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइट डाउन STCG। STCG STCG on STCG on sale of shares of Indian company. STCG on sale of shares of Indian company. STCG on sale of shares of Indian company. बोलो बेटा, नेचर ऑफ इनकम क्या है? चलो अमाउंट कौन से कॉलम में लेंगे अपन? तीनों कॉलम में ले लो, 25,000, 25,000, 25,000। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी। Dividend from South African company. Dividend from South African company received in South Africa.
डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीकन कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका. बोलो बेटा, व्हाट काइंड ऑफ इनकम? फॉरेन इनकम. कौन से कॉलम में लेंगे? 20,000 ROR, बाकी दो कॉलम निल निल. समझ गए ना बेटा कैसा कर रहे हैं अपन? नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके. रेंट फ्रॉम property in UK received in UK. Rent from property in UK received in UK. ब्रैकेट में लिखो बेटा 1,50,000 माइनस 30%. बराबर ना? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन याद है ना? 1,50,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज कमिंग टू 1,05,000. पक्का चेक कर लो. कौन से कॉलम में लिखना है? RN और NR में निल. समझ गए ना क्यों दोस्तों? नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. नेचर ऑफ इनकम क्या लिखेंगे बेटा? इंडियन इनकम. कौन से कॉलम में लेंगे? तीनों कॉलम में. कितना? 12,000 12,000 12,000. ठीक है. लास्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल इनकम. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन मध्य प्रदेश. Agricultural income from a land in Madhya Pradesh, bracket exempt under section 10(1), exempt under section 10(1). क्लियर है बेटा दोस्तों? डन. अमाउंट कॉलम सारे निल निल निल, तीनों कॉलम में निल. निकालो टोटल इनकम. क्या है बेटा टोटल इनकम? 1,62,000 और ROR. RN और NR शायद सेम ही आएगा ऑब्वियसली. कितना है? That's it. 37,000. That's all. That's the end of story for question number 11. चलो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन कॉन्फिडेंटली टेल द आंसर. ठीक है. चलो देखो बेटा, वापस सेम स्टोरी है. डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स इफ ही इज ROR, RNOR, NR. टेबल कैसा लगाना है समझ में आ गया ना? चलो सोच समझ के जवाब दो बेटा. एक एक पॉइंट का आपको मेरे को दो चीजें बोलना है. पहले कौन सा इनकम है, फिर किसको टैक्सेबल है. तेरा ये बोलो भाई, उनको इसको समझाओ. चलो फर्स्ट पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड इन कनाडा फॉर रेंडरिंग सर्विस इन बैंगलोर. चलिए फिगर को 3,50,000 करो ना. यही 50,000 तो फिर जीरो हो जाता. अरे समझे मेरा प्रॉब्लम? ठीक है. हाँ पढ़ो अभी. सैलरी रिसीव्ड इन कनाडा फॉर रेंडरिंग सर्विस इन बैंगलोर. बोलो व्हाट काइंड ऑफ इनकम? किसको टैक्स करेंगे? तीनों को टैक्स करेंगे. नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस सिचुएटेड इन सूरत. सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कनाडा. इंडियन इनकम तीनों को टैक्सेबल. क्यों इंडियन इनकम क्यों बनाए? हाउस इज इन सूरत. सूरत कहाँ पे भाई?
इंडिया में ही है ना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन कनाडा, क्या करेंगे? सिर्फ आरओआर को टैक्स करेंगे। अरे मजा आ रहा है क्या? चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना ये, बस अपने को स्टार्टिंग में 1-2 दिन पहले लग रहा था क्या ये 182, 60, 365 ये सब, अभी कंट्रोल में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अरे नेक्स्ट पॉइंट खतरनाक पॉइंट है यार, पढ़ो। इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन लंदन विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा फिगर 4 लाख रुपए है, पर उसमें 1 लाख इज रिसीव्ड इन इंडिया। अब मुझे बोलो किसको कितना टैक्स करेंगे? आरओआर को 4 लाख, आरओआर को तो डिस्कशन ही नहीं है, आरओआर को 4 लाख ही रहता है। आरएनओआर RNOR को entire 4 lakhs will become taxable because it is foreign income controlled from India. बराबर है ना? NR 1 लाख because 1 लाख is received in India. जो 1 लाख इंडिया में रिसीव करे वो 1 लाख तो इंडियन इनकम बनेगा ना। एक्चुअली सच बोलूं क्या इसमें, 1 लाख इज इंडियन इनकम, 3 लाख इज फॉरेन इनकम। तो 1 लाख तीनों के लिए टैक्सेबल है, 3 लाख सिर्फ दोनों के लिए टैक्सेबल है। समझे क्या? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर बट मैनेज्ड एंटायरली फ्रॉम कनाडा, व्हाट काइंड ऑफ इनकम? श्रेयस भाई बोलना भाई, देख क्या रहे? बोलो बेटा, व्हाट काइंड ऑफ इनकम? इंडियन इनकम। अरे इतना क्या सोच रहे यार, बिजनेस तो इंडिया में ही है ना, तो इट्स अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर व्हाट? ऑल। नेक्स्ट, रेंटल इनकम ब्रैकेट क्या दिए बेटा, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एक्शन ऑलरेडी ले चुके, आपको वापस दोबारा नहीं लेना है। रेंटल इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन कनाडा, रेंट इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट कनाडा and later on remitted to India. 100% it is foreign income and taxed only for ROR. समझे ना बेटा? रेमिटेड इंडिया को हुआ, बट रेमिटेड से क्या मतलब है अपने को? अक्रूवल रिसिप्ट से मतलब है ना। नेक्स्ट लाइन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन लंदन is received in London, oh my god, from government of India for projects situated in London. Straight answer, Indian income, because received from government of India. आज ही पढ़ा है, आज ही लिखा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया तो डेफिनेटली इट इज डीम्ड टू अकर एज इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, रॉयल्टी फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट कंपनी रिसीव्ड इन लंदन in connection with business situated outside India. बोलो बेटा, definitely it is foreign income, so we'll tax only for ROR को छोड़ेंगे नहीं अपन, उसको छोड़ने का ही नहीं है। नेक्स्ट, past foreign untaxed income पढ़ा है मैंने आपको ये चीज, of 21-22 earned and received there and it is brought to India during the previous year. क्या करेंगे? ये लिखा था मैं आपको कल, इसको ये साल कुछ करेंगे क्या? पुराना इनकम, पुराना टैक्स होने वाला था और अब भी इंडिया को लेके आ रहे हैं, अब इंडिया को लेके आएंगे तो टैक्स आएगा क्या? इट इज नॉट एन इनकम इन द करंट ईयर, तो किसी के हाथ में कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैंने कल लिखा था बेटा आपको, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, उसमें पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, वो ये दोस्त राइट साइड में जो दिख रहा है आपको, जो टिक 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 करे अपन, टिक टिक टिक, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अरे करे ना बेटा, उसमें समझ में आ रहा है क्या? तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स नॉट एन इनकम, इट्स नॉट टैक्सेबल। दोस्तों क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया भोपाल, इंडियन इनकम। पहले इनकम दिखाएंगे, उसके बाद अपन लेंगे 80,
TTA, एज कुछ भी नहीं दिए तो अपन अज्यूम कर रहे सीनियर नहीं है, ठीक है ना बेटा. नेक्स्ट, शेयर ऑफ इनकम received in India, received in from a partnership firm situated in Dubai. It is Indian income and it will be taxable for all. Student is telling, सर थोड़ी देर पहले आप ही तो बताए अगर फर्म टैक्स पे करता तो फिर पार्टनर्स वापस टैक्स पे नहीं करेंगे. बराबर है, मैं जो बोला सही है वो, बट वो केस कब आएगा अगर फर्म इंडिया में टैक्स पे करते तो. बट ये फर्म किधर है, दुबई, तो पार्टनर्स को इंडिया में एग्जम्पशन देंगे क्या. इंडिया में अगर फर्म है, इंडिया में अगर फर्म टैक्स पे किया तो वापस पार्टनर्स को दोबारा टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. बट ये केस वैसा नहीं है, ये केस में फॉरेन में टैक्स पे कर चुके फर्म तो इंडिया में पार्टनर्स को टैक्स करेंगे. दोस्तों समझा क्या. प्रोसीड, लेट्स स्टार्ट. क्या लेंगे टेबल, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, computation of total income of Mr. X, computation of total income of Mr. X for assessment year. For assessment year 24-25. चलो बेटा कॉलम्स क्या लेंगे, particulars, nature of income, ROR, RNOR, NR. Particulars, nature of income, ROR, RNOR, NR. Can we start? चलो बेटा क्या लिखेंगे फर्स्ट, सैलरी रिसीव्ड इन कनाडा, salary received in Canada, salary received in Canada for service in Bangalore, salary received in Canada for service in Bangalore. बोलो बेटा नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन इनकम. अच्छा वो सैलरी रिसीव्ड इन कनाडा फॉर सर्विस इन बैंगलोर लिखे ना, उधर ब्रैकेट में लिख लो 3,50,000 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 3,50,000 माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन. चलो कौन से कॉलम में लेंगे फिगर्स, तीनों में लेंगे, चलो ले लो तीनों में. नेक्स्ट, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ हाउस इन सूरत, कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ हाउस इन सूरत. बोलो बेटा नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंडियन इनकम. टेक फिगर इन ऑल द 3 कॉलम्स. बराबर है ना. नेक्स्ट वन, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, dividend from foreign company received in Canada,
डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन कनाडा. बोलो बेटा नेचर ऑफ इनकम क्या है? फॉरेन इनकम. विच कॉलम विल टेक द फिगर? ROR कितना है बेटा? 8,000. नेक्स्ट. Income from business in London. Income from business in London. Controlled from where beta? Friends, see and once. I'll put a dash and I'll write 1 lakh received in India, and this 1 lakh will become Indian income. Next one, 3 lakh received outside. This becomes foreign income. समझ रहे क्या मैं कैसा लिखा? And what is the figure I'll do? 1 lakh I will take in all the 3 columns. 3 lakh I will take only in ROR and RNOR column. बेटा समझे क्या ये प्रेजेंटेशन? I hope you are clear. Next one. Profit from business in Indore. Profit from business in Indore. Nature of income क्या है बेटा? Indian income. Profit from business in Indore. Nature of income, Indian income. Which columns? All 3 columns, 125, 125, 125. Next one, rental income. Rental income from property in Canada. Rental income from property in Canada received in Canada. Rental income from property in Canada received in Canada. Bolo beta, what kind of income? Foreign income. Which column will take the figure only? ROR. How much is the figure? 1 lakh 20,000. RNOR NR column? Nil. Next point. Interest received in London from Government of India. Interest received in London from Government of India. Interest received in London from Government of India. बोलो बेटा, what is the nature of income? Indian income. Take figure in all the 3 columns. 35,000, 35,000, 35,000. Clear, right? दोस्तों, next point. Royalty received in London. Royalty received in London. Royalty received in London in connection with royalty received in London
in connection with business outside India. Royalty received in London in connection with business outside India. Nature of income, what better? Foreign income. Only which column? ROR column. Come on, take the figure. Nature of income, foreign income. Take ROR column. How much better? 5 lakhs. बाकी दो कॉलम nil. दोस्तों क्लियर है? नेक्स्ट, past foreign untaxed income, past foreign untaxed income brought to India. Past foreign untaxed income brought to India during PY. Past foreign untaxed income brought to India during PY. ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट कॉलम क्या है बेटा? नहीं, नेक्स्ट कॉलम क्या है? नेचर ऑफ इनकम. नेचर ऑफ इनकम में लिखो नॉट एन इनकम. नेचर ऑफ इनकम में लिखो नॉट एन इनकम. इट इज नॉट एन इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर. फ्रेंड्स बराबर ना? तीनों कॉलम में क्या लिखेंगे? निल. समझे ना बेटा? सर ये पॉइंट इतना ही है, तो 2021-22 में कुछ इनकम कमाए बाहर, ठीक है, और उस पर अपना टैक्स पे नहीं करे इंडिया में. शायद इसलिए पे नहीं करे होंगे क्योंकि वो टाइम पे डबल टैक्स एग्रीमेंट ऐसा था कि बाहर ही टैक्स पे करो, इंडिया में टैक्स पे मत करो. सो इट इज नॉट टैक्स इन इंडिया. अभी 2 साल के बाद अपन वो पैसे को इंडिया में लेके आ रहे हैं. अभी कमाई नहीं है साल, पुराना कमाया हुआ पैसा अभी इंडिया को लेके आ रहे. अभी इंडिया को लेके आ रहे करके अभी इंडिया में टैक्स भरेंगे क्या? ऑलरेडी भर चुके हैं ना, बाहर भर चुके हैं, इधर नहीं भर चुके, तो क्या हुआ? समझ गए ना बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स. Interest on savings bank deposit in India. Interest on savings bank deposit in India. Nature of income, Indian income. Interest on savings bank deposit in India. Nature of income, Indian income. All 3 columns. By nil, 10,000, 10,000, 10,000. अरे डिडक्शन बाद में लेंगे, जीटीए निकालने के बाद. ऐसा थोड़ी सीधा नील करेंगे उसको. फिगर तो लेना पड़ेगा ना बेटा. वो तो जीटीए के बाद लेना ना डिडक्शन. तो जो जीटीए के बाद जब टोटल इनकम निकालेंगे तब लेंगे डिडक्शन. बट अभी तो नील नहीं लिख सकते ना आप बेटा. ये डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है. अगर एग्जम्पशन होता तो सीधा नील कर देते अपन, बिकॉज एग्जम्प्टेड इनकम विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. बट डिडक्शन तो बाद में माइनस करने का है ना. तो ले लो, तीनों कॉलम में 10,000 ले लो. नेक्स्ट पॉइंट, share of profit from partnership firm in Dubai. Share of profit from partnership firm in where, sir? Dubai. Nature of income, Indian income received in India. बराबर ना? तीनों कॉलम 80,000, 80,000, 80,000. सर आई होप वी आर क्लियर. चलो निकालो अभी ग्रॉस टोटल इनकम. डोंट क्लोज द आंसर, क्योंकि अभी अपने को और डिडक्शन में निकालने का है.
आंसर क्लोज मत करो क्योंकि अपने को डिडक्शन निकालने का है। हो गया क्या? क्या है ग्रॉस टोटल इनकम? 17,78,000 for ROR. RNOR 11,50,000. Please check. NR 8,50,000. चलो, that is gross total income. Less deductions under chapter 6A. Less deductions under chapter 6A. पता है ना कैसे लिखना है अपने को चैप्टर 6 से? 6 is what 6? Number 6 or Roman 6? Small Roman or big Roman? Thank you so much. Deduction in chapter 6A. Underline. Underline. 80TTA. Interest on savings bank account. बराबर ना? अरे अंडरलाइन करो, नीचे लिखो बेटा 80TTA डैश इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट. ये डिडक्शन है बेटा, एग्जामिशन नहीं है, इसलिए हम बाद में माइनस करेंगे. अभी आपको समझ में आ रहा है ना मैं फर्स्ट चैप्टर में क्यों पढ़ाया आपको 80TTA TTB ये सब, इसकी वजह से पढ़ाई ये सब. कितना TTA? 10 10 10. चलो निकालो बैलेंस टोटल इनकम. फिर से कैलकुलेटर चाहिए क्या आपको? कैलकुलेटर नहीं चाहिए ना? 17,68,000, 11,40,000, 8,40,000. That's it. That is the answer for this brilliant question. Question number 10. TTA सबको मिलेगा. If you remember, TTB only is for resident senior citizen. TTA में ऐसा कुछ भी नहीं है. क्या बेटा? अज्यूम मत करो बोला मैंने. सीनियर अज्यूम मत करो बोला मैंने. अरे क्वेश्चन साइलेंट है तो सीनियर अज्यूम करेंगे क्या? अरे किसी बंदे को देख के अपन सीधा ये बोलेंगे क्या? क्या रे श्रेयस? यू सॉ वन गर्ल, अच्छी लगी लड़की, पहले ये अज्यूम कर लेते कि इसका शादीशुदा होगी लड़की. बेसिक असम्पशन क्या होता है? अनमैरिड ना. ट्राई करते सर. अरे बेसिक असम्पशन तो अनमैरिड होना चाहिए यार, मैरिड नहीं यार. इधर भी बेसिक असम्पशन नॉन सीनियर होना चाहिए. सीनियर कैसा होगा सीधा? एक्स वाई बॉय. ठीक है. मिस्टर श्रेयस, मिसेस एक्स. चलो डन. चलो प्रोसीड. हो गया बेटा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अरे एक मस्त क्वेश्चन देखते क्या? गीता लीना, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, 8 मार्क को आया एग्जाम में वो. गीता और लीना, हाँ सिस्टर से. श्रेयस देख थोड़ा. दोनों ना? ऐसा सिर्फ एक ही होना है अपने को, बाकी कोई नहीं. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 9. सर आई वांट एवरी आंसर फ्रॉम यू ओनली.
ठीक है, बोलो, सोच समझ के बोलो. मिसेस गीता एंड मिसेस लीना आर सिस्टर्स. वंडरफुल, ब्रिलियंट. एंड दे अर्न्ड फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24. गीता का क्या सीन है देखो. मिसेस गीता इज सेटल्ड इन मलेशिया सिंस 1985. 1985 से मलेशिया से सेटल्ड है भाई, शायद शादी करके सेटल हो गए उधर ही. एंड विजिट्स इंडिया फॉर ए मंथ एवरी ईयर. इंडिया में हर साल 30 दिन के लिए आएंगे. इसका क्या सीन है अभी, गीता का क्या सीन है इनकम टैक्स के हिसाब से? क्या सीन है मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से? यार मेरे को क्या मालूम क्या सीन है, बोलो. आर ओ आर ए, आर एन ओ आर ए, एन आर ए. एन आर ए सीधा, कुछ सोचने का नहीं, कुछ नहीं. क्यों? अरे आते तो 30 दिन, कैसा बनते, कहां से बनते आर ओ रेजिडेंट? रेजिडेंट बनेंगे कम से कम 60 दिन तो हो यार. नेक्स्ट पॉइंट. मिसेस लीना, उसकी बहन, अरे गीता की बहन, शी इज सेटल्ड इन इंदौर सिंस हर मैरिज. क्या प्लानिंग है यार, एक इधर एक उधर. सिंस हर मैरिज इन 1994. चलो लीना का क्या सीन है? इंडियन. अरे इंडियन तो मेरे को भी मालूम है यार. लीना इज वेरी क्लियरली आर ओ आर. स्टूडेंट इज टेलिंग सर कुछ बोले नहीं ना वो लोग, कितना दिन है कितना दिन है क्या है. अरे सेटल्ड इन इंडिया बोले ना. अरे लीना अपने जैसी है, 1994 से इधर ही है, तो आर ओ आर ही बनेगा ना. अरे आप लोग आर ओ आर ही है ना, आपके मॉम डैड. हाँ तो देखो, तो गीता क्या है, आर 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 क्या, आर एन आर. लीना क्या है, क्या बहन लोग है यार, एक बहन आर ओ आर है, एक बहन एन आर है. गीता क्या था, एन आर. लीना क्या था. चलो अभी निकालेंगे इनकम. बोलेंगे ना आप लोग, बराबर बोलना टैक्सेबल है नॉट टैक्सेबल है. और इस क्वेश्चन में मेरे को आपसे नहीं सुनना है कि इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है, मेरे को बस इतना ही सुनना है आपसे, टैक्सेबल है नॉट टैक्सेबल है, बराबर बोलना. फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया, सेटअप इज इन रिसीव्ड देयर. मैं बोल रहा हूं जल्दीबाजी कुछ भी मत करो सर. लाइफ में थोड़ा चीजें ना थोड़ा सोच समझ के आराम से करना चाहिए. जल्दीबाजी में करे तो कुछ भी नहीं होता. 30 सेकंड्स पहले तो वो चिल्ला लिया ना ऐसा, टैक्सेबल टैक्सेबल. क्या सेटअप सर, ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? अरे मेरे भाई ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? नॉन रेजिडेंट के लिए अलग इंडियन इनकम अलग फॉरेन इनकम होता है क्या? अरे ये इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है, इतना तो दो जवाब पहले. बोलो बेटा, फॉरेन इनकम है, उस पर तो कोई डाउट नहीं है ना. ये इनकम किसको है, लीना को है गीता को है? गीता का क्या सीन है, तो क्या होगा, नॉट टैक्सेबल. अगर गीता आर एन आर होती तो टैक्सेबल होता, बिकॉज प्रोफेशनल इनकम विच सेटअप इज इन इंडिया. बट मैडम आर एन आर नहीं है, मैडम है एन आर. अगर एन आर को फॉरेन इनकम के लिए टैक्स लगाए ना, हाँ चप्पल चप्पल तो याद है, आंसर नहीं आ रहा है. दोस्तों क्लियर है क्या, बोलना बेटा. अरे ये अलग क्वेश्चन है यार, हर बार क्या आर ओ आर आर एन ओ आर एन आर, अलग क्वेश्चन है, 8 मार्क का एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम मलेशिया, किसको है सिर्फ, क्या करेंगे, टैक्सेबल. नो डिस्कशन, कुछ बात नहीं, सीधा का सीधा टैक्सेबल. क्यों, इंडियन इनकम है. नेक्स्ट पॉइंट, रेंट ब्रैकेट में क्या दिया बेटा, कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया, डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट मलेशिया एंड लेटर ऑन रिमिटेड टू. रेमिटेंस से अपने को कुछ संबंध है क्या, ये क्या, ये किसको आया, सिर्फ गीता. क्या होगा गीता को, नॉट टैक्सेबल, बिकॉज गीता इज ए नॉन रेजिडेंट एंड दैट इनकम इज ए फॉरेन इनकम. दोस्तों मजा आ रहा है, आज का पर्पस समझ गए ना आप लोग.
आज आपको बुलाने का सिर्फ यही पर्पस था कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करें, परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड इंडियन कंपनी किस किस को आया? गीता को आया, लीना को आया, क्या होगा? दोनों को भी टैक्सेबल। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम मलेशियन कंपनी रिसीव्ड इन मलेशिया, गीता को भी आया, लीना को भी आया। गीता को नॉट टैक्सेबल, लीना को टैक्सेबल। रे लीना आ रहा, अरे रे लीना, क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फ्रेंड ऑन मिसेस लीना's बर्थडे, गीता को ऑब्वियसली, गीता को क्यों आता? लीना की बर्थडे पे। लीना को कितना आया? 51,000। क्या लग रहा है आपको? क्यों 50,000 के ऊपर है? शुड आस्किंग सर, क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं ना, किधर किधर हुआ बर्थडे? रे लीना इंडिया में है तो बर्थडे इंडिया में होता ना रे, क्या क्वेश्चन है रे ये? नेक्स्ट पॉइंट, agricultural income from a land in Maharashtra exempt, which section? 10(1). excellent, very good, याद ना बेटा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट, past untaxed income brought to India, it's not an income दोस्तों, वंडरफुल। नेक्स्ट, fees for technical services, fees for technical services rendered in India, received in Malaysia, 25,000. Taxable, Q. Rendered in India. Rendered in India means accrued in India. Clear है? Next point. Income from business in Pune. Mrs. Geeta मतलब NR receives 50% of income in India, मतलब बाकी 50% बाहर मिलने वाला है, तो क्या होगा? कितना टैक्सेबल है? पूरा टैक्सेबल है भाई, बिकॉज बिजनेस इज इन वेयर? पुणे। ब्रैकेट में जानबूझ के नाटक करे ये लोग, क्या करके 50% इंडिया में आया बोल के। अपने स्टूडेंट्स है ना, अपन क्या सोचते, 50% इंडिया में आया तो 50% बाहर आया, 50% जो बाहर आया उसको टैक्स नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, बिजनेस तो पुणे में है ना, एक बार बिजनेस अगर इंडिया में है तो अक्रूड इन इंडिया, आधा बाहर आया आधा इंडिया में आया तो क्या हुआ भाई? अक्रू तो इंडिया में हुआ ना पूरा। सुपर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, हो गया खत्म कहानी, इंडियन इनकम टैक्सेबल। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, हो गया खत्म कहानी, इंडियन इनकम टैक्सेबल। समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट विद एसबीआई क्या करेंगे? टीटी ए, बेसिक assumption. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू एलआईसी, एटीसी, एटीसी डिडक्शन लेंगे। ये भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऐड करके लेस करेंगे क्या? हाँ, बट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक ऐड करके लेस करेंगे, बिकॉज दैट इज इनकम बेस्ड डिडक्शन, दिस इज पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। Excellent. Guys, we have learned this here only, me only, and to you only. You only, exactly. Chalo, let's close. Question number 9. It is given that it is given that Mrs. Geeta it is given that Mrs. Geeta is settled in Malaysia. It is given that Mrs. Geeta is settled in Malaysia and visits India and visits India for 1 month every year.
full stop. Accordingly, उसके बाद comma, wonderful. Accordingly, comma, she cannot satisfy. Accordingly, comma, she cannot satisfy. क्या basic condition? She cannot satisfy any of the basic condition. बराबर ना? दो है ना ऑप्शन आपके पास. She cannot satisfy any of the basic condition. She cannot satisfy any of the basic condition given under section 6.1. She cannot satisfy any of the basic condition given under section 6.1 and shall be regarded as any of the basic condition given under section 6.1 and shall be regarded as non-resident. Geeta is non-resident. Next paragraph. It is given that Mrs. कौन बेटा? Leena. It is given that Mrs. Leena is settled in Indore. Where is Indore? India. Wow. MP. Anyone here from MP? No. Everyone from Maharashtra only? No. How many are from Karnataka? No. कहाँ से बेटा? जम्मू एंड कश्मीर. What? Seriously? I was just joking and asking. मैं तो ऐसे ही पूछा जम्मू एंड कश्मीर से आए क्या करके. आप सच में हाँ बोल दिए क्या? सच में जम्मू एंड कश्मीर से? Oh, income tax applicable to you also. Wonderful. Good. Shreyas? Local. क्या एक्स? बात बात को एक्स. ये पागल हो गया एक्स के पीछे बहुत ज्यादा. रात भर ऐसे करता दिख रहा है. एक्स 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 एक्स. चलो. नो वन हियर फ्रॉम कर्नाटका? महाराष्ट्र? एवरीबॉडी ऑलमोस्ट. वंडरफुल. गुड. क्योंकि हर बार कभी ना कभी कोई ना कोई एमपी से कर्नाटका से कोई ना कोई मिलते इधर. ठीक है. प्रोसीड. क्या लिखे? इन द गिवन केस it is given that Mrs. Leena is settled in Indore since 1994. अच्छा मैरिज क्या करना है अपने को मैरिज का? Since 1994. Full stop. Accordingly, comma. Accordingly. Comma. Sorry. Accordingly, comma, her residential status would be. Accordingly, comma, her residential status would be. Status would be what beta? Resident and ordinarily resident. Would be resident and ordinarily resident. Clear? Chalo, take the columns now. Computation of total income of Mrs. Geeta and Mrs. Leena. Computation of total income of Mrs. Geeta and Mrs. Leena. Particulars: Mrs. Geeta, Mrs. Leena. Geeta is what beta? Non-resident. Leena is ROR. लेक्चर की जरूरत नहीं, छोड़ दो. चलो बेटा, what the first point?
इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया रिसीव्ड देयर ओनली, नो? कितना है ये? देखो बेटा एक बार देखो ना इधर. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई विल डू इज, मिसेस गीता कॉलम आई विल राइट नील, लीना कॉलम आई विल राइट डैश. गीता को नील इसलिए लिखे क्योंकि इनकम है पर टैक्सेबल नहीं है. लीना केस में इनकम ही नहीं है. समझे मेरा प्रेजेंटेशन? वंडरफुल. नेक्स्ट. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली. बोलो बेटा फिगर. 40,000 गीता का. लीना का? अच्छा कुछ भी नहीं है क्या? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. rent from property in Malaysia received where? Rent from property in Malaysia received there. बराबर है ना? गीता कॉलम नील, लीना का है क्या इनकम? तो डैश. बेटा प्रेजेंटेशन समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट. इंडियन कंपनी है क्या? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है? 5,000. लीना का? लीना तो आर है वैसे, कोई डिस्कशन ही नहीं है. नेक्स्ट. फर्स्ट कॉलम नील, सेकंड कॉलम नेक्स्ट. कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन बर्थडे, नो? फर्स्ट कॉलम डैश, सेकंड कॉलम 51,000. सर एक पॉइंट बोलूं क्या आपको? एक कॉन्सेप्ट बोलता, सुन लो ना. सुनो सुनो, बाद में लिखते हैं अपन, पर फिर भी सुन लो एक बार. पॉइंट क्या है बोलो तो, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन बर्थडे इट इज टैक्सेबल. वाई? इट इज मोर देन 50,000. इन इनकम टैक्स, आफ्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इज ओवर, we will go to income from other sources. There we will talk about the taxability of gift. There I will tell you, my dear friends, gift received on the occasion of marriage is exempt. शादी में जितना भी गिफ्ट मिले, किसी से भी मिले, पूरा का पूरा एग्जेप्ट. समझ रहे क्या बेटा? बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये, जो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन. सर लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, मैरिज इज नॉट जस्ट अ फैमिली प्लानिंग, it is tremendous tax planning. समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको 10 लाख देना है, आप उसको बोल देना कि भाई मत दे, अभी तू शादी में दे. तो शादी में 10 लाख का है, पूरा का पूरा क्या है? टैक्स फ्री. पूरा का पूरा टैक्स फ्री. 10 करोड़ भी हो सकता है. अगर आपका शादी हुआ, आपने बताया करोड़ रुपए आया किससे, आप अभी आपका दिमाग क्या चल रहा है मुझे पता है. सर अपने पास ब्लैक मनी है, तो उसको सीधा बोल देंगे करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो पड़ा है वो शादी में आया. वो आपको कुछ नहीं बोलेगा. शादी में आया बोलेंगे तो चुपचाप बैठेगा वो, पर आपसे ये पूछेगा कि ये पैसे दिया कौन शादी में, और उसको नोटिस जाएगा. क्या बोल के? क्या भाई तेरा दोस्त बोल रहा है कि तू करोड़ रुपए दिया, तू बता तेरे पास करोड़ रुपए कहां से आया, एक्सप्लेन. वो बोल रहा है मेरा दोस्त बोला क्या, अनएक्सप्लेन. 60%, 25%, 4%, इफेक्टिव रेट 78%. आजा बेटा आजा. समझे क्या? जो गिफ्ट लिया उसका कुछ भी नहीं, जिसका गिफ्ट दिया उसकी लग जाएगी. बराबर है ना बेटा? अपन बोलने के लिए बोल देंगे गिफ्ट मिला गिफ्ट मिला गिफ्ट मिला, ऑफिसर इतना ही पूछेगा किससे आया, उसको नोटिस जाएगा कि वो बोल रहा है कि तू गिफ्ट दिया, तेरे को कहां से आए पैसे तू बता.
वो अगर एक्सप्लेन किया तो प्रॉब्लम नहीं है. सी, नेवर देयर इज अ प्रॉब्लम इफ इट इज एक्सप्लेन्ड. द होल प्रॉब्लम विल कम ओनली इफ इट इज अनएक्सप्लेन्ड. समझे ना बेटा? अरे बोलना यार, सिंपल. चलो प्रोसीड. गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड हो गया. नेक्स्ट, agricultural income from land in Maharashtra. Wonderful. Exempt under section 10(1). Agricultural income of Maharashtra. Very popular for sugarcane. Very popular for sugarcane and wheat. Sugarcane, wheat, tremendous production is there in Maharashtra. बाकी भी है, नहीं है करके नहीं बोल रहा मैं, बाकी भी है, सबसे ज्यादा वो होता है. राइस मोर इज इन तेलंगाना, एपी, कर्नाटका. शुगर केन इज टेरिफिक इन महाराष्ट्र. यहाँ पे जो क्वालिटी का शुगर केन आता है वो किधर भी नहीं आ सकता. चलो नेक्स्ट. पास्ट अनटैक्स्ड इनकम brought to India. नील, नील, नील नहीं है क्या? डैश है क्या? ठीक है सर. नील में डैश में फर्क समझ गए ना आप लोग? हम कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? डन. नेक्स्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया. तो डिस्कशन ही नहीं है. कितना है? एंड डैश. और कुछ पॉइंट? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे. कितना बेटा? 12,000, 15,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी. कितना बेटा? 18,500 and 14,000. नेक्स्ट, short term capital gain on sale of shares of Indian company. What is the figure? Okay, 15,000, 25,500. Interest on savings bank account. कितना बेटा? Next, that's all. हो गया क्या बेटा? चलो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया? ठीक है. लीना का
ठीक है, डिडक्शंस क्या है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस किसने पे किया? गीता ने पे नहीं किया कुछ। लीना का कितना है? 30,000। 80 TTA 10,000 8,000 बराबर है ना? इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर, सीधा 10,000 स्टैंडर्ड नहीं है वो, इंटरेस्ट या 10 विच एवर इज लोअर। चलो बेटा, व्हाट इज टोटल इनकम? ठीक है, guys, I'm sure I've seen these questions. We got very good clarity on the concepts. We have solved very good questions actually. क्या हुआ श्रेयस, टायर्ड? इसका चेहरा देख। Can we proceed? और टायर्ड? अरे बोलो ना यार, चलेगा? श्योर? एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, हैप्पी? हाँ, थोड़ा स्माइल करके करो अभी प्लीज। चलो अभी मुझे ये बताओ, कौन से क्वेश्चन खत्म हो गए? फर्स्ट टू सेवेंथ हो गया, 8th अभी करते हैं अपन, 9, 10, 11 करेंगे। 9, 11 हो गया, 12th ये कल करेंगे बेटा अपन। 12th विल डू टुमारो, 13th इज ओवर, यू चेक वंस, ओपन करो 13th एक बार। वैसे एग्जाम में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ shall be excluded for calculation of number of days in India. 365 days में जितना दिन शिप में है वो हटा दो, बाकी कितना ही निकालो। 182 से कम है तो नॉन रेसिडेंट। आंसर भी दिया मैंने इधर, समझे ना बेटा? ऐसे क्वेश्चन भी लिखा था मैं आपको। यस, 14th क्वेश्चन देखना बेटा एक बार, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। मिस विविता paid a sum of $5,000 to Kulashekara, a management consultant practicing in where? Colombo, specializing in project financing. सर इंडिया का कोई बंदा कोलंबो के बंदे को पैसे दिया कुछ काम के लिए, पेमेंट was made in where? Colombo, and Kulashekara is a non-resident. Consultancy is related to a project in India with possible Ceylonese collaboration. Is this payment chargeable to tax in India in the hands of Kulashekara since services were used in India? 100% answer is yes. Same like example of our Ching Chang. Ching Chang पैसे दिया होटल का टेक्निकल सर्विस के लिए, इधर विविता ने पैसा दिया कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना बेटा? ये लाइन देखो, since services were utilized in India, payment received is chargeable to tax in the hands in India as it is deemed to accrue or arise in India. Section 9. And see this line, no? Since services are utilized in India, it is deemed to accrue or arise in India and be included in total income, whether or not such services are rendered in India, or whether or not the non-resident has a residence or a place of business or business connection in India. Tomorrow we'll talk about something called business connection. कल सुबह सुबह आते मैं सबसे पहले आपको वही पढ़ाऊंगा, बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है ना? दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट इन सेक्शन 9। आफ्टर दैट वी कैन क्लोज दिस चैप्टर। ठीक है, बट आज मुझे और 5 मिनट चाहिए आपसे, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर
8 दैट वी विल डू एंड क्लोज द क्लास फॉर टुडे. और कल सुबह आते हम लोग वो डिस्कस करते और कल ये चैप्टर खत्म कर देते. चलो बेटा 8th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे विल कंप्लीट. देखो बेटा, एक्स इज अ सिटीजन ऑफ, क्वेश्चन में खुद बताए कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है. ही कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ विजिट. अब मुझे बताओ स्पेशल केस आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों? स्पेशल केस विल कम ओनली व्हेन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर ए विजिट. अभी शार्प हो गया ना दिमाग अपना? स्पेशल केस नहीं आएगा. नहीं आएगा मतलब बेसिक कंडीशन दोनों भी है, 182 भी है, 60 एंड 365 भी है. अब ये देखो कितने दिन के लिए आया है? हाँ, दिसंबर 10, 2023. आप सीधा 250 डेज बोल के रेसिडेंट बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाता मेरे भाई. मैंने समझा है आपको. क्वेश्चन में अपने को बहुत बड़ा क्रीम बिस्किट देते हैं ऐसा, बट आपको ये समझना है कि कितने दिन के लिए आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई. कितने दिन के लिए प्रीवियस ईयर में आया वो इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पढ़ के 250 डेज देख के 250 गया, पर अपने को वो करना नहीं है. अपने को प्रीवियस ईयर में कितना दिन आया वो देखना है. दिसंबर 10 को आया, बराबर करा क्या? कितना है दिसंबर में? 22. क्या 22 दिन? 31 डेज जैन, 28 डेज मार्च, सॉरी 31 डेज मार्च. कितना है? 11. हे मैन, 112 डेज. स्ट्रेट आंसर नॉन रेसिडेंट. क्यों? 182 तो गया, समझ चलेंगे. 60 एंड 365 है ना? अरे 60 तो ठीक है, बट 365 कैसा आएगा? पहली बार इंडिया को आई है दोस्तों. सम आर टेलिंग अच्छा ये फर्स्ट टाइम वर्ड नहीं पढ़े तो जाएगा ना फिर? हाँ हाँ हाँ, फिर एक एक वर्ड का एक मीनिंग है. सो व्हाट इज स्टेटस? नॉन रेसिडेंट. बोलो अभी नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? ओनली इंडियन इनकम को टैक्स करेंगे. चलो भाई चालू करो. टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन यूके नॉट टैक्सेबल. टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन चेन्नई टैक्सेबल. चेन्नई भाई, चेन्नई इन्नडा चेन्नईडा चेन्नई दा चेन्नई received in India. Chennai is not in Telangana, sir. Chennai is in Tamil Nadu, sir. Okay, sir. Hyderabad is in Telangana, but Chennai is in Tamil Nadu. You didn't see that movie Chennai Express? That you saw, no? Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, full running. Tangabali. All this you will remember. This also you remember. Next point. टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया टैक्सेबल. टेक्निकल फीस फ्रॉम गवर्नमेंट टैक्सेबल. मैं कुछ बात नहीं करूंगा आगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो कुछ बात करने का ही नहीं है. नेक्स्ट. टेक्निकल फीस फ्रॉम वाई रेसिडेंट इन इंडिया. फीस इज पेड टू हिम आउटसाइड इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया. वो सब ठीक है, बट द बेनिफिट ऑफ सर्विस इज यूटिलाइज्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया. 100% answer is Indian income. Our story of Chingchang. अरे खतरनाक एग्जाम्पल दिया मैं. वो 5-star होटल टू बी सेटअप इन इंडिया, वो एग्जाम्पल के लिए इसलिए मैं उतना टाइम स्पेंड किया बिकॉज बहुत कॉन्सेप्ट है उसमें. नेक्स्ट. टेक्निकल फीस फ्रॉम जेड रेसिडेंट इन इंडिया. फीस इज पेड आउटसाइड इंडिया, सर्विस आउटसाइड इंडिया, एंड द बेनिफिट ऑफ सर्विस इज यूटिलाइज्ड बाय जेड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन भूटान. अरे भूटान, भूटान नेपाल के अंदर है क्या? अरे क्या बोल रहा भाई, आप साइड में है? अरे बाजू में, अंदर थोड़ी है यार. वेयर इज भूटान इन इंडिया? सम आर टेलिंग सर वही सिक्किम की बाजू में. अरे पर इंडिया में थोड़ी है यार. नेक्स्ट. टेक्निकल फीस फ्रॉम ए पेड टू हिम आउटसाइड इंडिया, सर्विस आउटसाइड इंडिया, एंड द बेनिफिट ऑफ सर्विस इज यूटिलाइज्ड बाय ए फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस इन टैक्सेबल. फिर से वापस सेम स्टोरी. बी आउटसाइड इंडिया यूटिलाइज भूटान फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल. हो गया. ओ कुछ भी नहीं. टाइम पास.
क्लियर है ना? अरे एक पॉइंट ऑब्जर्व करें क्या, ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ टेक्निकल सर्विस पे ही है, सिर्फ चिंचांग कॉन्सेप्ट पे ही है। सर चिंचांग याद है ना, सिंगापुर का टॉप आर्किटेक्ट। चलो लेट्स क्लोज स्टार्ट राइटिंग। मिस्टर एक्स, comma, a citizen of South Africa, Mr. X, a citizen of South Africa, has come to India for the first time on, आप 250 देख के रेसिडेंट बोलेंगे, भाई पूरा का पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता। अगर आप रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट बना दिए तो खत्म, कल्लास, पूरा आंसर खत्म। समझ गए ना? एनआर को अगर आर बनाए पूरा आंसर गया। कंटिन्यू। ही हैज कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम on 10th December 2023. Full stop. Accordingly, comma, duration of stay in India, accordingly, comma, duration of stay in India during the previous year. अच्छा है, आप लोगों को भी समझ में आ गया प्रेजेंटेशन कैसा लिखने का। सर अकॉर्डिंगली, हावेवर, ये सब क्या है, अच्छा लगेगा लिखने में, अपन ऐसा थ्रो नहीं कर सकते। मिस्टर एक्स नॉट हैविंग एनी वर्क केम टू इंडिया, सो दैट फेलो विल बिकम नॉन रेसिडेंट। इफ दैट फेलो इज नॉन रेसिडेंट, वी विल कैच हिम, एंड इफ वी कैच हिम फॉर इंडियन इनकम, दैट फेलो विल रिमूव चप्पल। ऑल दैट वी कांट राइट। समझ गए ना बेटा? तो इसलिए हम लोग ये अकॉर्डिंगली, हावेवर, ये सब टाइम पास करते हैं। प्रेजेंटेशन during the accordingly, comma, he is in India during the previous year for 1 month 2 days, full stop. Hence, comma, the residential status of Mr. X, hence, comma, the residential status of Mr. X, hence, comma, the residential status of Mr. X would be what? Non-resident, since he cannot satisfy any of the basic condition under section 6(1). Since he cannot satisfy any of the basic condition, under section 6(1). अभी क्या करेंगे? गलत। कंपटीशन कैसा करते? सीधा नॉन रेजिडेंट बोल के डिसाइड करे। नॉन रेजिडेंट को क्या इनकम टैक्सेबल है? कौन बोला ऐसा? आप ही तो पढ़ा है। हाँ मैं ही पढ़ा है, पर कौन बोला ऐसा? सेक्शन 5, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज पर सेक्शन 5, बराबर है ना सर? अपन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं? सेक्शन 5 के हिसाब से ही कर रहे हैं ना, तो एक लाइन लिख देते उसके ऊपर, एज पर सेक्शन 5, कमा, नॉन रेसिडेंट शेल बी टैक्सेबल, एज पर सेक्शन 5, कमा, नॉन रेसिडेंट shall be taxable, non-resident shall be taxable only in respect of, non-resident shall be taxable only in respect of Indian income. Non-resident shall be taxable only in respect of Indian income, that is income accrued. That is income accrued or received. Income accrued or received or deemed to be received
income accrued or received or deemed to be received or deemed to accrue or arise in India, or deemed to accrue or arise in India. That's it. Now start. Computation of total income. Computation of total income of Mr. X. Computation of total income of Mr. X for assessment year. कौन सा बेटा? 24-25. वही है ना आपने एग्जाम के लिए. ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में मैं वही दूंगा. I'll give same in every question because that is for our exam. ठीक है ना बेटा? कॉलम्स क्या लेंगे बेटा? Particulars amount. चलो बेटा 5-6 पॉइंट लिख लेते. फर्स्ट, technical fees from government of South Africa. Technical fees from government of South Africa. Technical fees from government of South Africa received in. Technical fees from government of South Africa received in where beta? UK. Received in UK. Amount column nil. Second, technical fees from government of South Africa technical fees from government of South Africa received in Chennai. Amount column 9 lakhs. Next, technical fees from government of India. Technical fees from government of India received in UK. Technical fees from government of India received in UK. Amount column 10 lakhs. Next, technical fees from government of India. Technical fees from government of India received in Chennai. Technical fees from government of India received in Chennai. कितना बेटा? 11 lakhs. नेक्स्ट पॉइंट पूरा स्टोरी मत लिखो, मैं सिंपल बोल देता हूँ, उतना ही लिखो. ठीक है? टेक्निकल फीस फ्रॉम Z, सॉरी Y. टेक्निकल फीस फ्रॉम Y received outside India. Technical fees from Y received outside India for service outside India. Technical fees from Y received outside India for service outside India, and the service is utilized for business in India. And service is utilized for business in India. Chalo, amount 2 lakhs. Next, technical fees from Z. Technical fees from Z. Technical fees from Z received outside India. Technical fees from Z received outside India for service outside India. For service outside India, and service is utilized
and service is utilized for business in Bhutan, and service is utilized for business in Bhutan. बराबर है ना बेटा? अमाउंट कॉलम कितना है बेटा? Nil. Next point. Technical fees from A. Technical fees from A received outside India. Technical fees from A received outside India for service outside India. Technical fees from A received outside India for service outside India, and service is utilized for business in India, and service is utilized for business in India. Amount column 2,10,000. 2,10,000. Last point. Technical fees from B. Technical fees from B received outside India. Technical fees from B received outside India for service outside India. Technical fees from B received outside India for service outside India, and the benefit of service is utilized, and the benefit of service is utilized, and the benefit of service is utilized for business in Bhutan. For business in Bhutan. Amount column nil. Get the figure of total income, friends. 34,10,000 is the answer for total income. 34,10,000. That's it. I hope we are fully clear, my dear friends. All of us. So friends, we just have few more little bit points left out in this topic, which we'll discuss tomorrow and close with this topic of residential status and scope of total income. But I strongly believe that today, whatever questions we solved, we got some tremendous clarity on this concept, guys. Pakka samajh mein aaya na? Pakka sabko, everybody? Thank you so much, friends. Have a great day. See you all tomorrow. Thank you. Bye-bye. Thanks for your cooperation. Bye-bye.